So good evening everyone. So yesterday we completed up till question number 308, starting with the next question in line, and now we are starting with the map based questions. We will be going through the questions, but the objective is not to go only through the questions which is being framed over here. For every question, I hope you all are sitting here with your atlases. If not with your atlases, then you will be focusing on the board, but if you are having your atlases, kindly take out your atlases, because randomly we will be switching over from one place to another place, and in every questions, whether it is from world map or it is from Indian map, we will try to go deep, we will try to delve deep into the topic, into the region, so that we may have a clear cut understanding about that particular area. आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आपने दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट, सारी कंट्रीज के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा, बट एवरी टाइम व्हेन अ क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, अगर उसी चार स्टेट्स को, चार टॉपिक को लेके, if I will frame a question and you will frame a question, there will be a different angle in that, right? So I will try to give you a perspective over here which may be helpful to you all, which may not be of any use, it depends upon UPSC, but the only thing is that you will focus deeply in each and every question that we are discussing over here. So starting with the first question over here, arrange the following states from maximum to minimum in terms of the length of borders with Myanmar. So how many states of Indian Union are having borders with Myanmar? यही 4 ही, all 4 are mentioned over here, and you have to tell the decreasing order of their borders: Nagaland, Manipur, Arunachal and Mizoram. Now see, these are the states: Arunachal, Nagaland, Manipur and Mizoram. Mizoram, this side it is Myanmar and this side it is Bangladesh. So these 4 states are having their borders with Myanmar. Now if you look at these states, can you make out which state is having maximum length of border? Arunachal, followed by Mizoram, followed by Manipur and then Nagaland. Are you getting that? So here the correct sequence shall be Arunachal Pradesh followed by Mizoram, 3, 4, 2 and 1. So 3, 4, 2 and 1, option A for apple. Are you getting my point? Shall be the correct answer. Consider the following statements. Tanzania. Before looking at it, let's try to give the question a look. Tanzania, Democratic Republic of Congo, Uganda, Burundi, Kenya, Zambia. How many of the above countries share land borders with Rwanda? Have a look over here. The country Rwanda. Here is the country that we are talking about, Rwanda. North of Rwanda it is Uganda, on this side it is Tanzania, south of Uganda it is Rwanda के साउथ में Burundi, Democratic Republic of Congo. So 4 countries are sharing border with Rwanda. One is Democratic Republic of Congo, Uganda, Tanzania, Burundi, 4 countries. And the question is saying that Tanzania, DRC, Uganda, Burundi, Kenya and Zambia are also given, which are not having contiguous borders with Rwanda. So only for option B for boy shall be the correct answer. Am I clear on that? Consider the following statements and find the correct ones.
Strait of Tehran connects Red Sea to Gulf of Aqaba. Strait of Gobal connects Red Sea with Gulf of Suez. Strait of Bab al Mandab connects Red Sea with Gulf of Aden. If you look at the same figure over here, this water body over here, this is Gulf of Aqaba, and this water body is Gulf of Suez, right? This is your Red Sea. Red Sea is connected to Gulf of Aqaba. This strait over here, this is called as Strait of Iran, and this strait over here is called as Strait of Gobal, right? So Strait of Gobal connects Gulf of Suez with Red Sea. Strait of Tehran connects Gulf of Aqaba with Red Sea. And another statement is very much simple. Strait of Bab al Mandab connects Red Sea with Gulf of Aden. Gulf of Aden is on the southeastern side of Yemen, and that is connected with to Bab al Mandab via Strait of Bab al Mandab to Red Sea. Am I clear on that? So all three statements hold correct over here. That is option C, C for cat shall become the right answer. If you look at this particular map again, and you look at this continent Africa. Now Africa remains in limelight due to some or the other reason. Sudan, South Sudan dispute going on, Somalia dispute going on, Rwanda, Democratic Republic of Congo going on, Gulf of Guinea countries remains in news due to some or the other reason. Nigeria हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता. Are you getting that? South Africa remains in news due to some or the other reason. These metal countries which are on the northern side of Africa continent, they also remains in news. So in Africa, any type of question may be asked. So a careful study of the political map of Africa is required. All the countries should be there in your brain, their locations, their neighboring countries. You are not supposed to mug it up. याद कभी नहीं हो पाएगा. But you will have to keep on looking at on this map as many number of times as possible. Middle East remained in debate, dispute. Red Sea remained in news continuously since last 2 years. Gulf of Persia, Strait of Hormuz, Arabian Sea, Gulf of Aden, Red Sea, ये पूरा dispute में रहा. Suez Canal, Israel, everything had remained in news. Anything can be asked by UPSC from any given section. Egypt had been at the center of discussion when it is a dispute related to West Asia. Turkey remains at the center of discussion. So any type of question can be asked from any of the locations, and UPSC has continuously asked question. जब आप PYQs कर रहे थे, it has asked you question which of the countries are not having borders with Mediterranean, और 2 बार उन्होंने question repeat किया. It has asked the questions on Lebanon, it has asked the question on Jordan, it has asked the question on West Asia number of times. Am I clear on that? So this area has to be covered very sincerely, very properly. Next question. Consider the following statements on Korean Peninsula. It is separated from Japan by Korea Strait. 38-degree parallel was initially considered as a border between North Korea and South Korea. Ulsan, Pusan and Incheon are important shipyards of South Korea. Nampo is a shipyard in North Korea. Nampo China में? Incheon is in China? North Korea, South Korea. I don't know whether it is visible from your side or not. Ulsan is over here. Incheon is over here. Pusan भी यहीं पर है. It is not given over here. Pusan, Masan, Ulsan, Incheon, they are all in South Korea. Nampo is over here, very close to Pyongyang, the capital of North Korea. So it is over here, and these are all known for ship making. They are shipyards for construction of ships, right? And these are one of the largest ship making ports
throughout the world. North Korea and South Korea are having that. And the largest ship breaking port is where? शिप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है, तोड़ा कहाँ जाता है? गुजरात, अलंग, बांग्लादेश में चिट्टागोंग. Are you getting that? So all three statements, it is separated from Japan by Korea Strait, correct. 38-degree parallel was the border between North Korea and South Korea, and the remaining two statements are also correct. So all four statements are correct. So option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following statements on Aral Sea. Good doubt. Aral Sea तो जानते हैं आप लोग? It is bordered by Kazakhstan and Uzbekistan. River Sir Darya and Amur Darya drains in Aral Sea. So both the statements are correct. So both 1 and 2, option C, C for cat, shall be the correct answer. Arrange the following prominent water bodies from west to east. Black Sea, Aral Sea, Caspian Sea, Lake Balkash, Lake Baikal. Black Sea. This is your Black Sea. This is your Black Sea. Caspian Sea, Aral Sea. Balkash is over here. Baikal is over here. Baikal is the deepest lake of the world. Balkash is the most shallow lake. Aral Sea is a well-known water body. Black Sea, Caspian Sea are well-known. So if you have these water bodies, you have to arrange from east to west or west to east. That should be clear in your brain. Black Sea, Caspian Sea, Aral Sea, Balkash, and then Baikal. The question is asking on west to east. So it will be Black Sea, followed by Caspian Sea, followed by Balkash, no, followed by Aral Sea, then Balkash, then Baikal. So 1, 3, 2, 4, 5. Option A for apple, shall be the correct answer. Arrange the following places of West Asia from south to north. Saida, Beirut, Tripoli, Banias. Which country are they located? This is your map of West Asia. These are the places in Israel, these are the places in Lebanon. Saida is over here in Lebanon, right? Beirut. Can you see Beirut? आपके पास एटलस है तो उसमें आप देखेंगे आपको दिख जाएगा. If atlas is not there, then look over here. Here this is Saida. This is the capital, Beirut. This is Tripoli. And north of this Lebanon, it is the country Syria. The coastal city of Syria over here, that is Banias. So Saida, Beirut, Tripoli, Banias. Israel continuously bombing that region. Hezbollah, yes or no? Remained in limelight. At any given point of time, the question may be framed up over here. So the correct sequence from south to north will be Saida, Beirut, Tripoli, Banias. So it will be 4, 3, 2, 1.
So option A, B for boy shall be the correct answer. Are you getting that? Able to understand? Yes or no? Agla question, this is on Israel, the coastal places of Israel. In your atlas there is a detailed map of West Asia, open that, not an Asian map. Every atlas is having a detailed map of West Asia, kindly open that map. In that you will find all these places. Rafah border, Israel-Egypt border, Gaza, very famous, Jerusalem, known, Tel Aviv, Haifa. Look at these places in the map of Israel. You will be able to find all these places in the map of Israel. See over here, if you are not able to find over there and don't know whether it is visible or not, try to Rafah Yera, Gaza, Jerusalem, Tel Aviv Yafo, Haifa. Very common places, prominent places. Rafah border remained in news throughout that Hamas crisis when it was going on, Gaza crisis. Gaza तो अपने आप में ही है. Jerusalem, prominent city, that is a reason for a dispute. It is the origin of 3 religions. Tel Aviv Yafo, again a very common place, prominent place, Haifa. They all remained in news, so their order, south to north, north to south, anytime UPSC may ask that what is the order. So Rafah, Gaza, Jerusalem, Tel Aviv Yafo, Haifa, prominent places. So learn them in order, north to south या नीचे से ऊपर तक पूरा याद करते चले. रफा, रफा के बाद गाजा, जेरूसलम, तेल अवीव, याफो, हाइफा, सैदा, बेरूत, त्रिपोली, बनियास. ठीक है, और ऊपर निकल जाएंगे टर्की आ जाएगी. So the correct order is south to north, 5 4 3 2 1. So 5 4 3 2 1, again option B, B for boy shall be the correct answer. Am I clear on that? 100%. Your objective of sitting in the class is not to mark the answers over there. Either you should look at the board when I am opening the map or open your atlases. And if you are not comfortable with any of the two, then open the same map in your mobile phones or gadgets, whatever you are using. If you will look at that, it will be of any use. हो सकता है ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ आ जाए. But you will be able to relate, mark out if you will be understanding something over it. Haifa is prominent. Why? Coastal city, prominent. It is known for import, export, a prominent port over there. जरूरी नहीं है कि कहीं पर बम गिरे तभी important हो. Consider the following statements on Dead Sea. Dead Sea, you know, border of Israel and Jordan. So it is located in Jordan Rift Valley. It is the Rift Valley that is called as the Jordan Rift, and it is the lowest point of the world. And it is written it is lowest point of Asia. So Asia कभी हो ही जाएगा. It lies between Israel and Jordan, correct. It is the lowest point of Asia, that is also correct. It is known for high salinity. Yes or no? Very high salinity gets recorded in Dead Sea. So all the 4 statements hold true. Option D, D for dog shall be the correct answer. If you look at this particular map, a very simple statement may be given by UPSC. Jerusalem is closest to Amman, the capital of Jordan, or Beirut is nearest to Damascus, the capital of Syria, or Beirut is nearest to Damascus, or Jerusalem or Amman. अब तीनों कंट्रीज दे दी या इजराइल की ले लिया उन्होंने. Jerusalem is closest to Amman, Damascus, Beirut, या एक कोई प्लेस और ले लेंगे यहाँ से. Are you getting that? Any type of question may be framed कि किसकी कैपिटल किससे सबसे नजदीक है. So a careful study of map is required, that you should try doing that. Consider the following statements on Netzarim corridor. Which part of Gaza? Northern part of Gaza, correct or not? Philadelphia corridor is southern part of Gaza. Blue line between Israel and Jordan. Israel and Lebanon. Israel and Lebanon. Netzarim corridor remained in news. Why? Israel created a blockade over this. People were not allowed to move and cross this corridor. So Netzarim corridor came to limelight since last 2 years continuously. इसके पहले साल भी था, last year भी news में रहा. Philadelphia corridor
is in the southern part of Gaza. Netzarim corridor में अगर central part of Gaza लिख के आ जाता तो भी सही है. It is from central to northern part. That entire region in Netzarim corridor. Blue line between Israel and Lebanon, ये तो बहुत पुरानी line है. So all three are correct. Option C, C for cat shall be the correct answer. Next question. Consider the following statements on Great Lakes of North America. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario is the order from west to east. Order of the Great Lakes. These are the Great Lakes? Yes or no? These are the Great Lakes. If you look at the order from west to east, Superior is over here, then Michigan, Huron, Erie, Ontario. So if we are moving from west to east, it is Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario. This is the order of the lakes present over there. Next statement, Michigan lies entirely in USA. See, all these lakes are having border. This is the international border, USA, Canada border. So part of the lakes is in USA, part of the lake is in Canada, but Lake Michigan from here to here, it is entirely in USA. This is the only lake out of these 5 finger lakes which is entirely in the state of in the country USA. Superior is the largest freshwater lake in terms of surface area. This we were discussing yesterday also. All these lakes are interconnected by canal network. Can you name the canals over there? Superior to Huron, Huron to Erie, Erie to Ontario. Superior is connected to Huron by Sioux Canal. Huron is connected to Michigan by Mackinac Canal. Huron is connected to Erie by Detroit Canal. And Erie is connected to Toronto by Walland Canal. So Sioux Canal connects ye. This is Sioux Canal. This is Mackinac Canal. Here you are having the city of Detroit. So it is called a Detroit Canal. Here there is a city of Hamilton. Hamilton Canal भी कहते हैं, Walland Canal भी कहते हैं. So all these lakes are interconnected by the canal network. This statement also holds true. So all the 4 statements are correct. आ रहा ना समझ में? So all 4 are correct. Option D, D for dog shall be the correct answer. Consider the following statements on Panama Canal. It is almost 80 km in length. It is under the control of Panama since 1999. It lies entirely in the country Panama. It is fed by the waters from Lake Gatun, River Chagres and Lake Alajuela, Maiden Lake. Correct or not? No idea? NCRT जो है ना, NCRT, उसमें पनामा कैनाल का फिगर बना हुआ है, और जो पनामा कैनाल का फिगर बना है उसमें ये लेक बनी हुई है. उन्होंने लेक बना के लेक को लिखा हुआ है गाटून लेक, but they have not mentioned in the text that Gatun Lake is providing water to Panama Canal. Why Panama Canal needs water? Lifting of the ships has to be carried out. So a chamber is being filled up, ship moves up, it moves to next chamber. In this manner the ships are able to cross the Panama Canal. This is not there in Suez Canal. So continuous supply of water is required for the execution of Panama Canal, and that water is supplied by Lake Gatun and Lake Alajuela. और ये गाटून लेक तो आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई. Are you getting that? So all 4 statements are correct. It is entirely in the state of Panama. Lake Gatun and Lake Alajuela. Alajuela is also called as Maiden Lake, and Lake Gatun gets water by river Chagres.
So all 4 statements are correct. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Clear on that? Consider the following lakes of Africa: Turkana, Tanganyika, Edward, Malawi, Tana, Chad, Kivu. How many above are Rift Valley lakes? Rift Valley पता है ना? Nile Valley, Rift Valley. So all the lakes which are present in the Rift Valley, they will be called as Rift Valley lakes. Apart from that, the lakes are not Rift Valley lakes. So all the lakes which are present over here, ये पूरा, this is the Great African Rift Valley. Are you getting that? ये है African Rift Valley. So all the lakes which are present over here, they will become a part and parcel of Rift Valley lakes. Lake Tana कहाँ पर है? It is over here. Origin of river Blue Nile and Atbara. 2 rivers originate from the Lake Tana region. One is river Blue Nile, other is river Atbara. And Lake Chad कहाँ पर है? This is Lake Chad. Border of Niger, Chad, Nigeria and Cameroon. 4 countries are having borders with Lake Chad. Lake Chad is over here. Lake Chad is a playa. It is a saltwater lake. Lake Tana is a caldera lake. Caldera yaar hai? It is a caldera lake. Lake Tana. So right. So Lake Tana is the origin of river Blue Nile and Atbara. Victoria is the origin of river White Nile. White Nile and Blue Nile confluence at Khartoum, that is in Sudan, the capital of Sudan. River Atbara, which originates from Lake Tana, also confluences with river Nile and it confluences at Atbara. The place is called as Atbara. So Atbara confluences at Atbara and from Atbara river Nile becomes navigable. यहाँ पर navigation possible नहीं. Why the river is called as White Nile? Huh? The river is called White Nile because it makes number of rapids and it produces bubbles. So the water appears white in color. So throughout the coast from Lake Victoria up till Atbara, it appears whitish in color and hence the river is called as White Nile. Why this river is called as Blue Nile? The overall topography of the region, when you look at the river, it appears bluish in color and hence it is called as Blue Nile. So Blue Nile is having a region, White Nile is having a region, they confluence at Khartoum and then the river is called a river Nile. From Khartoum onwards and specifically from Atbara onward, the river Nile becomes navigable. So यहाँ से लेके यहाँ तक it is navigable. For this portion it is not navigable. River Nile is the longest river of the world. So Turkana, Tanganyika, Edward, Malawi and Kivu. These are Rift Valley lakes. Lake Tana is a caldera, Chad is a playa. So only 6, option C, C for cat shall be the correct answer. Am I clear on that? Victoria is a caldera lake. Lake Volta we were discussing yesterday. Volta यहाँ पर है, over here. Then one of the important lakes of Africa continent is 𝐂𝐭 reservoir, Nigeria. Country Nigeria में आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे, you will find 𝐂𝐭 reservoir. That is on river Nigeria, river Niger, right? 𝐂𝐭 reservoir. Here this is Lake Malawi, Lake Zambezi, important lakes over here, right? These are the major lakes which are present over here. Lake Nasser in Egypt. Egypt में लोकेट करिए, आपके एटलस में होगा, यहाँ तो नहीं दिया. Lake Nasser. Can you find Lake Nasser in Egypt? That is again an important lake over there that is present in Egypt. The rivers in Alaska were reported to be changing colors due to mineral based pollutants. This happened in 2025, first half.
Consider the following statements on that. River Yukon and River Tanana are the major rivers of Alaska. River Yukon and River Tanana are the major rivers of Alaska. Yes or no? River Yukon and River Tanana. On the northern side you will find River Yukon, here you will find River Tanana. In your atlas it will be clear if you will look in your atlas. Yukon and Tanana, these are the major rivers of Alaska. Next statement is Alaska is known as Valley of 10,000 Smokes. Geothermal energy के लिए, and so Valley of 10,000 Smokes. Mount Denali is the highest peak of Alaska. Old name is Mount McKinley. Atlas में हो सकता है Mount McKinley दिया आपको, दोनों दिया. So Mount McKinley is the old name, Mount Denali is the new name. That is the highest peak of Alaska and it is the highest peak of North America also. It is located on which range? Alaska range. It is not on Rockies, do remember that. Mount McKinley, the highest peak, is not located on Rockies, it is on Alaska range. The northernmost range over Alaska, have a look over there, it may be written as Brooks Range. Can you find the Brooks Range? That is found on the northern side of Alaska. Then one of the rivers over there, River Mackenzie, close to the border of USA and Canada, in Canada. Can you find River Mackenzie? That is a prominent river, Mackenzie, that drains northward and it drains in the water body. The water body over there is Beaufort Sea. Can you find that? Yes. So here all the three statements hold true. So all three, option C, C for cat, shall be the correct answer. Senkaku Island. They are located in East China Sea, disputed between China, Japan and Taiwan. They are currently under the control of Japan. They are uninhabited. So all four are correct. Option D, D for dog. All four statements are correct. Any issue in that? Question number 324. Consider the following statements. Drake Passage separates Cape Horn of South America with Antarctica. Magellan's Strait connects Atlantic Ocean with Pacific Ocean. आवाज ना आई. I am showing you the location, you kindly check in your atlases. Drake Passage is over here. This is your Drake Passage, right? And Magellan Strait is this. This island is what? Tierra del Fuego. The island over here, Tierra del Fuego. Tierra del Fuego is separated from the mainland of South America by this strait that is called as Magellan Strait, and hence it is called a connecting link between Atlantic and Pacific. And this is the Drake Passage. इसके नीचे अंटार्कटिका आ जाए. So both the statements hold true. So both 1 and 2, option C, C for cat, shall be the correct answer. Am I clear on that? Yes. Yes. हाँ? सेंकाकू. ताइवान कह रहा हमारा है, जापान कह रहा हमारा है, चाइना कह रहा हमारा है. रीजन ये है कि यूएसए दुनिया में 99% डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उसके पीछे एक ही कंट्री जिम्मेदार है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले तो जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिरा दिए, फैटमैन और लिटिल बॉय, हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है. उसके बाद फिर वो जापान को सपोर्ट करने लगा इसलिए कि जापान उसके डोमिनेंस में रहे टू कंटेन यूएसएसआर. यूएसएसआर के टुकड़े कराने में भी अमेरिका का ही हाथ था.
उसके टुकड़े हो गए। अब उसको रशिया को कंटेन करना था, तो उसने वहां पर अपना बेस बना दिया जापान के कहने पे, ठीक है। अब चाइना क्लेम करने लगा हमारा है, चाइना ने उसका नाम दूसरा दे दिया। ताइवान ने भी अपना नाम चाइना वाले को मॉडिफाई करके दे दिया, और जापान ने उसका नाम रखा हुआ है सेंकाकू। भाई आप ये बताइए कि आज की डेट में अब तक का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उससे बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं किसने किया? तालिबान ने। ऑफिशियली एक्सेप्टेड, जिम्मेदारी ली है ना तालिबान ने कि हमने किया, और तालिबान को खड़ा किसने किया? यूएसए ने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान, ये तो सबको पता है ना। यमन एंड ओमान शेयर द कोस्ट लाइन विद पर्शियन गल्फ, यमन इज नॉट शेयरिंग। छाबहार पोर्ट इज लोकेटेड ऑन पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। So Chabahar port is not located. 2 and 3 are wrong. 1 is correct. Only 1. What are the oil fields of Iran? Can you name? Anyone who can name 5 oil fields of Iran? Huh? Okay. Okay. कतर का कुछ नहीं है? नॉर्थ और साउथ दोनों उसी का बता दो तुमको। एंड दे आर गैस फील्ड्स, ये ऑयल फील्ड है। ऑयल फील्ड्स ऑफ ईरान, अच्छा 2 बता दो। एहवाज, open the atlas on your atlas, map of West Asia. एहवाज, बंदर अब्बास, लाली, गतसरन, नेफ्ट सेफिड, लाली LALI लाली, गतसरन, एहवाज, बंदर अब्बास, मस्जिद सुलेमान। बेटा मैप पे सब मार्क मिलेंगे नहीं, कोशिश करूं मैं। मैंने इसमें लिखा मैप फॉर ऑयल फील्ड्स ऑफ ईरान। मैं सिर्फ यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ, कोई अमेरिका मुझे ना खोज ले। बंदर अब्बास इज ओवर हियर, इंपॉर्टेंट पोर्ट। एहवाज आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा एटलस में, लोकेट एहवाज ओवर हियर। उसी के थोड़ा सा वेस्ट में, नॉर्थ में जाएंगे, मस्जिद सुलेमान मिल जाएगा। मस्जिद सुलेमान हर एटलस में, मस्जिद सुलेमान, एहवाज एंड बंदर अब्बास, ये 3 तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। लाली, गतसरन, नेफ्ट सेफिड, these are the major oil fields of Iran. मस्जिद सुलेमान नहीं मिला? ओरिएंट में मिलेगा, ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा। मस्जिद सुलेमान है देयर इन ओरिएंट एटलस, ऑक्सफोर्ड में नहीं है। नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड अच्छी एटलस है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ऑक्सफोर्ड में भी है जो ओरिएंट में नहीं है। कंसिडर बहुत सारी चीजें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन सूडान। एरिट्रिया, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैव बॉर्डर्स विद सूडान। Yes or no? River Blue Nile and White Nile confluence at Khartoum. So we were discussing just now. Nubian Desert and Eastern Desert lies in Sudan.
Nubian Desert and Eastern Desert, both the deserts are located in Sudan, yes or no? Border of Sudan. Border of Sudan with countries Egypt है, Libya, Chad, Central African Republic, South Sudan, Ethiopia, Eritrea, right? And the question is asking on Eritrea, Libya and Central African Republic, all are having borders with Sudan. Nubian Desert and Eastern Desert, both the deserts are located in Sudan also, and Eastern Desert is partly in Egypt also. It is both in Egypt and Sudan, right? So all three statements hold true. Option C, C for cat, shall be the correct answer. Consider the following players on the rivers of Southeast Asia. Kindly open a map of Southeast Asia in your atlases. Map of Southeast Asia. Kindly open a map of Southeast Asia. And in map of Southeast Asia, locate the country Myanmar. In country Myanmar, locate this river Irrawaddy. Can you find the river Irrawaddy? It flows through Yangon. Yangon is over here. It flows through Mandalay. Mandalay is over here. This is one of the most interior ports of Asia. Yangon is present over here, and this water body over here is Andaman Sea. Am I clear on that? Same has been written over here as the first statement. Irrawaddy flows through Mandalay, Yangon, Gulf of Martaman. That place, that water body is also called as Gulf of Martaman, right? So Gulf of Martaman is a section of Andaman Sea. अगर आप atlas में देखेंगे in Asian map, it is written as Gulf of Martaman. Are you getting that? Next, have a look at river. Next river given is Chao Phraya. Can you find river Chao Phraya in your atlas? Chao Phraya is somewhere over here. It flows through the city of Bangkok and makes the delta at the water body that is Gulf of Thailand. Can you find river Chao Phraya? Yes or no? Thailand में. It is not written. लिखा होगा. मैप ऑफ एशिया में चेक कर लीजिए. अगर एशिया में देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में चेक कर लीजिए. दोनों में नहीं है. होगा, चेक करो. So river Chao Phraya flows through Bangkok and makes the delta at Gulf of Thailand. Another river Mekong. Mekong तो बहुत prominent है. Originating from Tibet region. It flows through Phnom Penh, Ho Chi Minh City, that is in Vietnam, and makes the delta at South China Sea. This is Mekong. This is river Mekong, draining in this manner. This is Ho Chi Minh City, right? Phnom Penh is what? Cambodia की capital. So Phnom Penh is located on Cambodia. Cambodia remained in news. UPSC यही क्वेश्चन दे देगा. Phnom Penh, which river flows through Phnom Penh? Phnom Penh, Cambodia और थाईलैंड का झगड़ा हुआ था ना अभी. दोनों की कैपिटल, एक की कैपिटल मेकॉन्ग पे, दूसरे की कैपिटल चाओ फ्राया पे. Are you getting my point? The capital of Thailand is on Chao Phraya, capital of Cambodia is on Mekong, making delta at Ho Chi Minh City. The water body over here is South China Sea. And the fourth river given over there is river Hong. It flows through Hanoi, and the water body of here is Gulf of Tonkin. Gulf of Tonkin. So Irrawaddy, Mandalay, Yangon, Gulf of Martaban. Chao Phraya, Bangkok, Gulf of Thailand. Mekong, Ho Chi Minh City, Phnom Penh, South China Sea. And Hong, Hanoi, Gulf of Tonkin.
All 4 are correctly matched. So option D, D for dog, all 4 shall be the correct answer. बात समझ में आ रही? Following statements on Southeast Asia. Again, Southeast Asia. Thailand and Cambodia are not having borders with China. Do they have border with China? No. Laos is the only landlocked country of the region having borders with China. Is it having border with China? The state of Johor separates Malaysia and Singapore. Malaysia, Singapore is an island. Yes or no? Singapore के north में भी पानी है. Malay Peninsula. So Malay Peninsula is separated from Singapore and the water body over there is Johor Strait. नहीं दिया है? Johor Strait. Johor Bahru Strait is one and the same. So this is Malay Peninsula. ठीक है? This is your island, Singapore. ये सिंगापुर का मेन आइलैंड है. ठीक है? सिंगापुर और मलाय पेनिनसुला के बीच में अब जो मैं लाइन बना रहा हूँ उसको देखिएगा. This water body over here. This is called as Johor Bahru Strait. So Johor Bahru Strait separates Singapore from Malaysia. और सिंगापुर के साउथ में स्टेट ऑफ मलक्का और स्टेट ऑफ सिंगापुर, जिसको हम सिंगापुर स्टेट कहते हैं या स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं, वन एंड द सेम. दैट सेपरेट सिंगापुर फ्रॉम इंडोनेशिया. सुमात्रा और सिंगापुर के बीच में दैट इज मलक्का स्टेट. सिंगापुर और मलाय पेनिनसुला मलेशिया के बीच में जौहर बाहू स्टेट, जौहर स्टेट. So state of Malacca separates Singapore and Indonesia, correct? Johor state separates Malaysia and Singapore, that is also correct. Sunda state separates Java and Sumatra. That is common. Hai? So all 5 statements are correct. So all 5 option D, D for dog shall be the correct answer. Am I clear on that? Can we move on? Yes. नहीं एक ही. नहीं, मलेशिया के बाद सिंगापुर आएगा बेटा. मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जौहर स्टेट है, लेकिन मलेशिया एक्सपैंड कर रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है. ठीक है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में भी आप उसको स्टेट ऑफ मलक्का बोल देते हैं, और सिंगापुर और सुमात्रा के बीच में भी आप उसको स्टेट ऑफ मलक्का बोल देते हैं. तो स्टेट ऑफ मलक्का और सिंगापुर स्टेट इज अ लार्ज वाटर बॉडी एज कंपेयर टू एनी अदर स्मॉल स्टेट जैसे जौहर स्टेट. अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो क्वेश्चन समझ में हो गया ना. बोर्नियो, सिलेबस, मोलक्कस, हल्माहारा. हाँ, कोई कंफ्यूजन है उसमें? बोर्नियो, सिलेबस, मोलक्कस, हल्माहारा. साउथ ईस्ट एशिया का डिटेल मैप खोलिए. यू आर लुकिंग इन मैप ऑफ एशिया, ओपन द मैप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. Look at, this is your Borneo, syllabus, here it is Molukkas, Halmahara. Are you getting that? Borneo is the largest island, syllabus, Molukkas, Halmahara, and the question is asking you to arrange them west to east. So Borneo, syllabus, Molukkas, Halmahara, 1, 2, 3, 4. Option A for apple shall be the correct answer. Are you getting that?
देखिए सुनिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैप वर्क यू आर डूइंग, द क्वेश्चंस माइट बी कमिंग अप एंड यू ऑल माइट बी गेटिंग दिस फीलिंग कि हमारा तो मैप पूरा तैयार था, क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे, राइट? So it will happen in UPSC also, in prelims examination there also, same will happen. The only thing is that you should learn the art to derive the answer to the map based question. एक छोटा सा एरिया अगर आप उठा लें उस पर 1000 क्वेश्चन बनेंगे, so you cannot memorize 1000 questions, right, for every area. So try to develop the technique, जितना आपने पढ़ा उससे रिलेट करके आंसर निकालने की कोशिश करिए, जो यहाँ हो रहा है वही यूपीएससी में होगा, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फिलीपींस. Human species Homo luzonensis was named after an island of Philippines. So yes, Sulu Sea separates, lies between Borneo and Philippines. Borneo, Philippines. Bashi Channel, Luzon Strait separates Philippines from Taiwan. Sulu Sea is where? This is your Sulu Sea. ये Philippines रहा, ये Borneo रहा. This is Sulu Sea. Are you getting that? So Sulu Sea lies between Philippines and Borneo. Am I clear on that? Then Bashi Channel over here, Luzon Strait. नॉर्थ में बाशी चैनल है ताइवान के एकदम पास में, और पूरे वाटर बॉडी को हम कहते हैं ल्यूजॉन स्ट्रेट. व्हाई ल्यूजॉन? बिकॉज द लार्जेस्ट आइलैंड ओवर हियर दैट इज ल्यूजॉन. ये वाला आइलैंड मिंडानाओ, फिलीपींस का सदर्न आइलैंड ग्रुप इज मिंडानाओ, दिस आइलैंड इज ल्यूजॉन. ल्यूजॉन के नॉर्थ में इट इज ल्यूजॉन स्ट्रेट, फर्दर नॉर्थ इट इज बाशी चैनल. सो बाशी चैनल और ल्यूजॉन स्ट्रेट, बोथ ऑफ देम सेपरेट्स फिलीपींस फ्रॉम ताइवान. एम आई क्लियर ऑन दैट? So all three statements hold true. Option C, 𝐂𝐭 shall be the correct answer. Consider the following statements on Amazon Basin. Guyana Highlands act as watershed between Amazon and Orinoco river basins. Guyana Highlands, Amazon Basin, Amazon river you all know, Orinoco river is in Venezuela. उन दोनों के बीच में Guyana Highlands exist, so it is correct. Negro from north and Madeira from south are the major tributaries of Amazon. Manaus is an important port on Amazon. This is your river Amazon, right? N for north, N for Negro. This is Negro. Madeira is from here, this side, Madeira, and this is your major river that is flowing Amazon. So Negro from north, Madeira from south. These are the major tributaries of river Amazon. Orinoco river ये है, Guyana Highlands ये है. So Guyana Highlands over here separates Amazon basin from Orinoco basin. Manaus is a port that is located over here, यहाँ पे कहीं. It is far away from the coastal area. In your atlas map of South America, Manaus is given over there. Political map, MANAUS, Manaus. Can you find that? So all three statements given over here are correct, that Negro from north and Madeira from south are the major tributaries of Amazon. Manaus is an important port. Guyana Islands acts as a watershed. All three, option C, 𝐂𝐭 shall be the correct answer. Am I clear on that? Yes. Consider the following statements on South America again. Bolivia and Paraguay are the only landlocked countries of South America. Very common statement. Chile is the longest country north-south of the world. River Paraguay and river Uruguay both drains at Rio de la Plata. Uruguay, Paraguay. These are the major rivers of South America.
Amazon, Orinoco over here, then you are having this system over here, right? River Uruguay is from here, no, Uruguay is from this side, not this side, this one, right? River Sao Francisco is over here. Sao Francisco को याद रखिएगा, San Francisco is the place in North America and Sao Francisco river is in South America, Brazil. Do remember that. River Sao Francisco has nothing to do with San Francisco. Am I clear on that? The major rivers of South America. River Paraguay and Uruguay, these are the reason for the names of the country. The country Uruguay is called Uruguay because of this river. Country Paraguay is called as Paraguay because of this river. All three statements hold correct, so option C, C for cat will be the correct answer. Consider the following lakes of Suez Canal. Suez Canal is located on Sinai Peninsula, Egypt. It passes through multiple lakes. The northernmost lake in Suez Canal is Manzala. If you move further south, you find Timsa Lake. You move further south, you get Great Bitter Lake, and further south you get Little Bitter Lake. Right? See over here. Is it visible? This is Small Bitter, Little Bitter Lake, Great Bitter Lake, Lake Timsa, and this one is Lake Manzala. Little Bitter, Great Bitter, Timsa, Manzala, the prominent lakes through which Suez Canal passes. Arranging these lakes in order in north to south or south to north direction is something that can be asked by UPSC at any given point of time. So have a look at the question. You have to arrange them south to north. So it will be 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1 will be north to south, and 1, 2, 3, 4 will be south to north. So it is asking south to north, so it will be 1, 2, 3, 4. Option A for apple. Consider the following statements on Coral Triangle. It is located in Western Pacific, Eastern में, Pacific Ocean having its coastline with Australia, Asia, that is called as Western Pacific. So it is located in Western Pacific. Crown Jewel is associated with it. Crown Jewel, सुना ना? नहीं, Raja Ampat, one of the most mega biodiverse regions of the world. It's called a Raja Ampat. Indonesia का eastern part है, Raja Ampat. That is called as Crown Jewel. Crown Jewel because of its very high biodiversity. Australia is not a part of Coral Triangle that we were discussing yesterday. Timor-Leste and Solomon Islands are included in this. So all four statements hold true. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Yes. कौन सा? Crown Jewel is a part of this coral triangle which is located on the eastern part of Indonesia, and that region is specifically known for very high biodiversity, right? Both in terms of corals as well as other aquatic marine life over there. And the region is called, the place is called a Raja Ampat, RAJAAMPAT, Raja Ampat. Crown Jewel तो उसको nickname दिया हुआ है. So all four are correct, that is option D, D for dog. Golden Triangle, Golden Triangle is what? ड्रग्स ले जाना जाता है ना, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस. मलेशिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट. Thailand, Myanmar, Laos, 1, 2, 3. So only 3, option C, C for cat will be there. In the same manner, Golden Crescent, Afghanistan, Pakistan and Iran. Turkmenistan is not part of that. Again only 3, option C, C for cat.
ठीक है ना, ये तो पढ़ा होगा आपने करंट अफेयर्स में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन बाल्टिक सी. इट हैज अ शोरलाइन विद जर्मनी, पोलैंड एंड रशिया. बाल्टिक सी जर्मनी, पोलैंड, रशिया तीनों के साथ है. फिनलैंड के साथ है. स्वीडन के साथ है. नॉर्वे के साथ भी है. इट इज नोन फॉर लो सैलिनिटी. बाल्टिक सी. कील कैनाल कनेक्ट्स इट टू नॉर्थ सी. दैट इज अलोंग जुटलैंड पेनिनसुला. यस और नो? डेनमार्क जर्मनी का पार्ट है. पेनिनसुला is Jutland Peninsula. Kiel is in Germany. That is the northernmost part of Germany. Danish states, the Great Belt, the Little Belt, and the Sound connects it to state of Kattegat and Skagerrak. Correct or not? Gulf of Riga and Gulf of Nansk. So this is Baltic Sea, right? This is written as Gulf of Riga, and this is Gulf of Nansk. Not written over there. This is Gulf of Riga, Gulf of Nansk. This is your Baltic Sea. This is Finnish Gulf. And here, when it is getting connected to Red Sea, sorry, it is North Sea, then here you find all that water bodies, right? हाँ, sound वगैरह जो वहाँ लिखा हुआ. So these statements, Danish Straits, the Great Belt, the Little Belt, and the Sound, they are found over there, which connects it to Gulf of Kattegat and Skagerrak. Gulf of Riga and Gulf of Nansk, they are also present in Baltic Sea only. So all the statements written over here with Baltic Sea are correct. This is your Jutland Peninsula. See over here, you can see it, it is written over here. This place, Kiel. Kiel is in Germany. See the color, it is in Germany. Through Kiel, a canal is made over here, right? It connects North Sea with Baltic Sea. North Sea over here, Baltic Sea over here. But the peninsula over here, this entire peninsula, this is called a Jutland Peninsula. So Jutland Peninsula includes Germany and Denmark. So Denmark, Germany दोनों है यहाँ पर. Kiel Canal is through Germany. So all 5 statements hold true. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following pairs. Strait of Kerch connects Black Sea with Sea of Azov. Strait of Bosphorus connects Black Sea with Sea of Marmara. Strait of Dardanelles connects Sea of Marmara with Aegean Sea. Strait of Otranto connects Aegean Sea to, sorry, Adriatic Sea to Ionian Sea. Strait of Messina separates Ionian Sea with Tyrrhenian Sea, right? One more strait is the Strait of Bonifacio. Strait of Bonifacio नहीं है. It separates Italy from France. Corsica and Sardinia नहीं. Corsica is in island of Italy नहीं. Corsica is of France, Sardinia is of Italy. उनके बीच में Strait of Messina, no, sorry, Strait of Bonifacio. Strait of Bonifacio, right? All the 5 statements are correct over here. Clear on that? ये तो common है, पता होगा ना आप लोग को. So all 5, option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following countries bordering North Sea. Germany, Denmark, Belgium, Netherlands, UK. You have to arrange them in a clockwise sequence. यानी कुछ अलग है, कुछ अलग है, ठीक है ना. अच्छा, clockwise sequence.
arrange them. हाँ, क्लॉकवाइज सीक्वेंस आप देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन जो आपको क्लॉकवाइज सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाए कहीं से शुरू कर दीजिए। आप पहले सीक्वेंस निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए कौन सा ऑप्शन उसके साथ मैच करेगा। You can start from Denmark, followed by Germany, then Netherlands, Belgium, UK. Denmark 21435, 21435. Are you getting that? नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, प्रॉब्लम? This is your North Sea, huh? And you have to arrange the countries. Here it is your Denmark, this is your Germany, this is your Netherlands, Belgium, UK. You have to arrange them in clockwise. सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है, डेनमार्क से शुरू करना है, आप यहाँ से शुरू कर लो, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम. वंस यू गेट दिस ऑप्शन कि दिस इज द सीक्वेंस, देन उस सीक्वेंस को आप ऑप्शंस में रख के देख लीजिए, किसी ना किसी एक ही ऑप्शन में वो मैच करेगा. Consider the following statements. Nares Strait separate Greenland from Queen Elizabeth Island. Denmark Strait separates Greenland from Iceland. Davis Strait separates Greenland from Baffin Island. So this is your Greenland. Here it is Nares Strait. Nares, N-A-R-E-S, Nares Strait. Here it is Davis Strait, देखिए लिखा हुआ. This is your Denmark Strait, written over this. So Iceland, Greenland, Denmark Strait. Here it is Baffin Island. Greenland किधर है बेटा? Baffin Island. This is your Davis Strait. Here it is. This is Elizabeth Island, right? ऊपर आर्कटिक ओशन, so this is Nares Strait. So Greenland की इस तरफ Nares Strait. Here you are having Denmark Strait. Here it is Davis Strait. Am I clear on that? Same has been given over here, that Nares Strait separate Greenland from Queen Elizabeth, Denmark Strait separate Greenland from Iceland, and Davis Strait separate Greenland from Baffin Island. Are you getting that? So all three statements hold correct. So option C, C for cat, shall be the correct answer. Greenland, Elizabeth. सामने से आप देख रहे हो ग्रीनलैंड के लेफ्ट में. नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखिए, मिल जाएगा आपको. नरेस स्टेट इज गिवन इन एवरी एटलस, प्रोमिनेंट स्टेट. नहीं मिल रहा? गॉट दैट एवरीवन? Sacramento, San Joaquin. These are the rivers and the cities.
Look at the rivers and the city. Sacramento and San Joaquin. San Francisco में है कि नहीं है? Both these rivers are Rift Valley rivers. That is the Rift Valley. Sacramento, San Joaquin, Rift Valley. Colorado is in Las Vegas. Las Vegas जानते हैं? Las Vegas is known for what? World capital of casinos. Yes. It is located on river Colorado. River Potomac, that is in Washington, and river Hudson is in New York. ये वाली रिवर्स बेटा, ये दो रिवर तो नहीं मिलेंगे मैप पे, राइट? गूगल पे इफ यू विल गो एंड राइट द रिवर फ्लोइंग इन वॉशिंगटन, यू विल गेट द आंसर एज पोटोमैक. एटलस में नहीं मिलेंगे, गूगल के मैप पे आपको खोजोगे तो आपको मिल सकती है. कोलोराडो मिल गई, known for making Grand Canyon, and river Sacramento, San Joaquin. ये नहीं मिली? In your atlas there is a detailed map of USA. Open that. एक पेज के बाद. After 2 pages you will get a detailed map of USA. Open that. उसमें मिल जाएगा आपको. Locate the city San Francisco. Can you find the city San Francisco? वहां पर देखिए रिवर्स दोनों कॉन्फ्लुएंस कर रही हैं. सैक्रामेंटो, सैन जैक्विन. Not able to find? Sacramento and San Joaquin both are the prominent rivers flowing through San Francisco, that is the city of Golden Gate, western coast of USA. Not given? मिला? नहीं. All the 4 pairs are correctly matched. Option D, D for dog. Should I open on the map? Is it required? पोटोमैक और हडसन तो नहीं दिखेंगे, उनको तो रिसर्च करना पड़ेगा. Consider the following cities of USA. You have to arrange them from north to south. New York, Baltimore, Norfolk, Miami. Which is the northernmost? Northernmost is New York. Southernmost is Miami. So 1 and 4. एक ही ऑप्शन है. 1, 2, 3, 4. Baltimore, Norfolk. See, the coastal cities on the eastern coast of USA, they are very important. इसको this is the city Miami. This is your Washington, Philadelphia, Boston, New York City. Baltimore is over here, right? Norfolk is somewhere over here. Norfolk is known as the Rust Belt. Norfolk to Boston. Boston से लेके Norfolk तक, this is called a Rust Belt. यहाँ से लेके यहाँ तक. Rust, R-U-S-T, Rust. Rust होता है ना, जंग लगना लोहे में, वही वाला Rust, Rust Belt. Because not of the soil, because it is continuously working 24/7 since 1890. People are working in different slots and all the offices are not closed at any given point of time. कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरी कोस्टल एरिया ये पूरा शट डाउन हो जाए. लॉकडाउन का पीरियड छोड़ दीजिए, कोरोना पेंडेमिक जो था, बाकी कभी बंद नहीं होता. So it is called a rust belt. It is called as mid-Atlantic coast of USA, a prominent industrial region of USA. But that all we study in geography optional, not in GS. Right? So rust belt is more than sufficient. It is known as rust belt.
Option A for apple is the correct answer. Consider the following pairs. Again the Great Lakes are there and the associated cities are there. Now is Duluth located on Lake Superior? Hamilton on Lake Ontario, Buffalo on Erie, Milwaukee on Michigan. Important places. Lake Superior अभी लोकेट करा था ना आपने? Here the place is Duluth. This is the place Milwaukee. Here you are having the place Detroit. This is Buffalo, and here it is. Buffalo is over here. Sorry, and here it is Hamilton. So Hamilton is on Lake Ontario. I will mark it again. This is Lake Superior, and here it is Duluth. This place is Milwaukee. Here it is Buffalo, and here it is Hamilton. Hamilton is on Lake Ontario, Buffalo is on Lake Erie, Milwaukee is on Michigan, Chicago is also on Michigan, and Duluth is on Superior. Detroit, that is on Lake Erie. Detroit is known as the world capital of automobiles. Akron, a prominent place over here. Akron, अगर आप USA के map में देखेंगे, you will find it over here. Akron, that is known for. Akron is known for what? Anyone? World capital of tires. Pittsburgh is the world capital of steel. All four are correctly matched. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following statements. Georgia, Armenia, Iran, Iraq, Syria, Bulgaria, Greece. How many of them are having borders with Turkey? जॉर्जिया का है, आर्मेनिया का है, ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया, ग्रीस. Have a look at Turkey over here and look at the countries. This is the country Syria. Here it is Iran. इसके बीच में यहाँ पर इराक है. This is the country Armenia, Georgia, Bulgaria, Greece, Cyprus over here. हाँ, अजरबैजान कहाँ? नहीं, अजरबैजान यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा. ये इनक्लेव भी उससे टच नहीं कर रहा टर्की से. ये रहा इनक्लेव, ये है इनक्लेव. दैट इज नॉट टचिंग टर्की. बेटा मैं आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. So here all 7, option D, D for dog, shall be the correct answer. Am I clear on that? Yes or no? Consider the following rivers of Europe. बेटा अगर दिखा भी रहा तो इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं है अजरबैजान, तो भी इसके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. Rhine, Rhone, Weser, Garonne, Seine, Danube, Elbe. How many of the rivers given above flows through the city or country of Germany? Rhine, Rhone, Weser, Garonne, Seine, Danube, Elbe. Rhine is in Europe, is in Germany or not? Rhone, Weser, Garonne. Rhine is in Germany, Rhone is in France, Weser Germany, Garonne France, Seine France, Danube Germany में है.
जर्मनी से आगे बहुत आगे तक गई है, एल्ब जर्मनी. So 4 rivers are given over there which flows through Germany, that are Rhine, Weser, Elbe and Danube, right? Rhine, Weser, Elbe and Danube. Rhine, Weser and Elbe move towards north. नहीं, North Sea नहीं, north. Two are draining in Baltic Sea, one is in North Sea, right? And Danube is going towards Black Sea. Danube is a river that is flowing through 7 different countries, and out of those 7 countries, 5 national capitals. So here answer will be only 4, option B, B for boy. And which 4 rivers are there? Rhine, Weser, Elbe and Danube. Consider the following statements on Siberian rivers: Ob, Yenisei, Lena. Know about Ob, Yenisei, Lena? Russia. 3 rivers flowing towards north: Ob, Yenisei and Lena. All these rivers drain towards the Arctic. Yes or no? This is river Ob. Are you getting that? This is river Yenisei and this is river Lena. Irtish is a tributary of river Ob, right? This over here, this is the plain area, this is the plateau, and here it is the mountains, hills and mountains. This is called as West Siberian Plain, this is called as Central Siberian Plateau, this is called as East Siberian Hills. So between Ob and Yenisei, it is a plain area. Between Yenisei and Lena, it is a plateau area. On the eastern side of Lena, it is mountains area, that is a hills area. River Ob, Yenisei and Lena are the prominent rivers of Russia. Irtish is a tributary of river Ob, left bank tributary, plain, plateau, hills. So Siberian plain between Ob and Yenisei is correct. Plateau between Yenisei and Lena is correct. Siberian hills on the eastern side of Lena is correct. Are you getting that? So all 4 statements are correct. Option D, D for dog, is the correct answer. मुझे मालूम है आप लोग के दिल पे बहुत अच्छा नहीं बीत रहा है, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि हमने मैप पूरा तैयार कर लिया और उसके क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हो गए. अगर आप अपने क्वेश्चन मुझे दोगे ना, तो आई एम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप लोग जिस पोजीशन में हो उससे थोड़ी अच्छी पोजीशन में मैं हूँ, सच बता रहा हूँ. मैप के साथ ऐसे ही है. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, कि ये आप एड ऑन कर रहे हो अपने नॉलेज को, पता नहीं यूपीएससी में क्या काम आ जाए. सच्चाई यही है. Consider the following players over here: Jolin Mountains, they are in Scandinavian Peninsula, yes or no? Scandinavian Peninsula, Jolin Mountain, बहुत बड़ा बड़ा लिखा. Black Forest is in Germany, correct or not? Apennines are in Italy, correct or not? Apennine is in Italy, yes or no? पूरे इटली के फिजिकल मैप के ऊपर बड़ा बड़ा एपेनाइन लिखा होगा. Cantabrian are in Spain. All 4 are correctly matched. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following statements: Tasman Sea separates Australia from New Zealand. Yes or no? New Zealand और ऑस्ट्रेलिया के बीच में there is Tasman Sea. Timor Sea separates Australia from Indonesia. ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में है तिमोर सी. बास स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया.
द आइलैंड ऑन द सदर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ होबार्ट है, तस्मानिया, उसके बीच में बास स्ट्रेट है। टोरस स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पपुआ न्यू गिनिया, यस और नो, एनी डाउट, एनीवन? चारों आपको मिल जाएंगे किसी भी एटलस में इन मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। टिमोर सी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तस्मान सी located on the south eastern side of Australia, Torres Strait is located on north of Australia, Gulf of Carpentaria के नॉर्थ बगल में, केप यॉर्क पेनिनसुला के नॉर्थ में टॉरेस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट सेपरेट तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दैट इज इन द साउथ ईस्ट। ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग शैल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर ऑन दैट? ऑस्ट्रेलिया की चारों जो वाटर बॉडीज हैं, इफ यू आर हैविंग द मैप, काइंडली लोकेट बेयागिल गल्फ, डार्विन, लोकेट डार्विन, डार्विन इज इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ टेरिटरी, डार्विन मिला? डार्विन के पास में बेयागिल गल्फ, बेयागिल गल्फ, बेयागिल गल्फ डार्विन के पास में, देखिए बेयागिल गल्फ, ओके। सिडनी को लोकेट करिए, सिडनी मिला? सिडनी के पास में देखिए वाटर बॉडी, शार्क बे, दिस इज योर, यहाँ पर आपको मिलेगा तिमोर सी, दिस इज योर तस्मान सी, दिस इज योर बास स्ट्रेट, और दिस इज योर टॉरेस स्ट्रेट, राइट। इसके अलावा हियर यू आर हैविंग दिस शार्क बे, सॉरी सिडनी में स्टोन बे, स्टोन बे इन सिडनी, शार्क बे ओवर हियर, नहीं मिल रहा, शार्क बे तो मिल गया। पर्थ, पर्थ के पास में देखिए ज्योग्राफी बे, ज्योग्राफी पे मिला, ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी पे ओवर हियर, डार्विन यहाँ पर है, हियर यू विल फाइंड बेयागिल गल्फ, बेयागिल गल्फ, शार्क बे, स्टोन बे, these are important water bodies around Australia. But in this question all the four statements hold true, so option D, D for dog will be the correct answer. Are you getting that? Following statements on New Zealand, Wellington, the capital, and Auckland are located on South Island. Wellington and Auckland both are prominent places. Wellington the capital है, Auckland is one of the hotspot in terms of tourism. They are both on North Island. Mount Taranaki and Lake Taupo are located on North Island. Yes? No? चलिए आप लोग के पास जो भी सोर्सेज है मैप को उसको खोल लीजिए, न्यूजीलैंड का मैप, एंड लोकेट वेलिंगटन द कैपिटल, ऑकलैंड, वेलिंगटन और ऑकलैंड यहाँ पर। इफ यू विल लुक फॉर लेक टोपो, हियर इट इज लेक टोपो एंड हियर इट इज माउंट तारानाकी। नॉर्थ आइलैंड में अगर आपके पास न्यूजीलैंड का डिटेल मैप है तो हियर यू विल फाइंड ऑकलैंड, दिस इज योर वेलिंगटन द कैपिटल सिटी, दिस इज माउंट तारानाकी, हियर यू विल फाइंड लेक टोपो,
right? And here you will find another place that is called as Napier. Napier मिलेगा यहाँ. Locate Christchurch over here. Locate Dunedin over here. ये रहा. Dunedin over here, Christchurch over here. Can you find that? Christchurch, Dunedin, North Island, South Island के बीच की water body Cook Strait. Can you find that? Here पूरे South Island पे written as Southern Alps. Can you find Southern Alps? Yes or no? Then जहाँ क्राइस्टचर्च लिखा है, क्राइस्टचर्च के बैक साइड में देखिए आपको लिखा मिलेगा कैंटरबरी प्लेन. कैंटरबरी प्लेन. ओरिएंट एटलस में देखिए न्यूजीलैंड का डिटेल मैप पे मिल जाएगा आपको कैंटरबरी प्लेन. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि ओरिएंट में है. ओरिएंट आई यूज्ड टू फॉलो, तो मुंह से ओरिएंट ज्यादा निकलता है. ऑक्सफोर्ड इज इक्वली गुड बेटा. जीएस फाउंडेशन में तो हर बैच में मैंने बताया. आप जीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट नहीं होंगे बेटा, तो इसलिए नहीं बताया होगा. लेक टॉपो, TAUP, वो तो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. लेक टॉपो, इट इज अ कार्डेरा लेक. न्यूजीलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड ग्रुप. यस और नो? न्यूजीलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड ग्रुप. न्यूजीलैंड. वेलिंगटन कैपिटल ऑकलैंड, located on South Island, it is a wrong one. Taranaki and Taupo are located on North Island, it is a correct one. North and South Islands are separated by Cook Strait, that is also correct. 2 and 3 are correct, so only 2, option B for boy shall be the correct answer. Am I clear on that? अच्छा, आप लोग यहाँ क्लास में बैठे हो सीखने के लिए ना, तो कुछ नया मिल रहा है ना, खत्म बात. इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए सब कुछ आपको आता होता तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल वहां हो जाता. जाफना, कैंडी, अनुराधापुरा, डम्बूला. ये तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा. Arrange the above cities from north to south using the codes given below. मैप ऑफ श्रीलंका आपके पास अपने एटलस में होगा. काइंडली फोकस ओवर हियर. सबसे पहले पॉइंट देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ में यहाँ पर आपको मिलेगा, अरे जाफना के ऊपर पॉइंट पेड्रो. कैन यू फाइंड दैट? दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ श्रीलंका. एंड देन यू आर हैविंग जाफना. जाफना इज द डिस्टर्ब्ड एरिया ऑफ श्रीलंका. जाफना इज कनेक्टेड. देखो जाफना को फॉलो करो. यहाँ पर अगर आपकी एटलस में दिख रहा है, यहाँ देखो, this is a very narrow strip of land, and this narrow strip of land over here, this is called as Elephanta Pass, right? This island over here, this is nearest to our country India, this is called as Talai Mannar. Island जो यहाँ पर है तलाई मन्नार, that is closest to India. उसके बाद आ जाएगा एडम्स ब्रिज, राम सेतु. Am I clear on that? Coastal cities of Sri Lanka: Batticaloa, Hambantota, Galle, Colombo. These are the important coastal cities of Sri Lanka, right? Inland cities, ये रहा आपका अनुराधापुरा जो क्वेश्चन में, this is your Kandy, right? और कौन सा डम्बूला इज ओवर हियर. और कौन सा पॉइंट है? जाफना यहाँ पर. Elephanta is a narrow strip of land connecting Jaffna Peninsula with the mainland of Sri Lanka, and that is a disturbed area, Jaffna, right? हम्बनटोटा को चाइना ने डेवलप किया था, अब कर रहा है.
अभी भी कर रखा उसका, वो उसको ऑपरेट भी कर रहा है, अम्बन टोटा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पार्ट है अम्बन टोटा, राइट। माउंट पितुरू थलगाला, इसको लोकेट करिए। माउंट पितुरू थलगाला दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। माउंट पितुरू थलगाला हर एटलस में दिया है। आपको श्रीलंका का डिटेल मैप खोलना है अपनी एटलस में, इंडिया के नीचे वाला श्रीलंका मत खोलना, श्रीलंका का डिटेल मैप, राइट। माउंट पितुरू थलगाला दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका। रिवर महावेदी गंगा, महावेदी गंगा, महावेदी, महावेद, वेद, चार वेद वाला वेद, महावेदी गंगा दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर इन श्रीलंका, रिलीजियस रिवर, पायस रिवर। बेटा इधर से ऐसे जा रही है, देखो आपको इसमें तो नहीं बनी है, महावेदी, वेदी, महावेदी गंगा है, यू विल फाइंड दैट महावेदी गंगा। बेटा उसमें क्या लिखा है देखो, वेली है, छोड़ दो रिवर नहीं, ये जो है उसको लोकेट कर लीजिए। श्रीलंका में दे वर्शिप रावण ना, जाफना, यू हैव टू अरेंज नॉर्थ टू साउथ, जाफना, अनुराधापुरा, डम्बूला, देन कैंडी, so it will be 1 3 4 2, 1 3 4 2, option A for apple, 1 3 4 2, that will be the correct answer. Consider the following statements on Japan. Tokyo is located on Honshu, the largest island of Japan. जापान में कितने आइलैंड ग्रुप हैं? सारी हैं? मैंने 5 पढ़े थे। अच्छा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और एक नीचे चेन ऑफ आइलैंड यूको। Tokyo located on Honshu, the largest island of Japan, correct or not? Hokkaido is in the north and Ryukyu are in the south. Hokkaido northernmost है, Ryukyu south में। Hiroshima is located on Honshu. Nagasaki located on Kyushu. दोनों confirm हो ना? All 4 statements are correct. That is option D, D for dog, shall be the correct answer. Hokkaido places Sapporo. On Hokkaido, locate the place Sapporo. Another important place over there is Kushiro. Kushiro and Sapporo. Can you find Kushiro? These are the important places. Tokyo को locate करिए. Close to Tokyo locate Chiba. Sushiba. Chiba अलग है, सुशिमा अलग, सुशिबा अलग है। Chiba, सुशिबा नहीं है। कावासाकी, योकोहामा, कावासाकी। थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ जाइए, लोकेट क्योटो, कोबे, ओसाका, नागोया। ओसाका तो होगा, हाँ? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। शिजुका, these are all part of urban agglomeration of Japan. अर्बन एग्लोमरेशन याद है? कॉनरबेशन याद है? नहीं? अर्बन मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है कॉनरबेशन, अर्बन एग्लोमरेशन, अर्बन कॉरिडोर, सैटेलाइट टाउन, हाउ अ स्मॉल सिटी डेवलप्स एज अ बिग सिटी, एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इन अर्बन एग्लोमरेशन। दिस इज द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ द वर्ल्ड। टोक्यो के आसपास का पूरा जितना जगह है। सुशिबा इज कॉल्ड एज द साइंस सिटी। योकोहामा, कावासाकी, they are big industrial cities. Nagoya is called as Nagoya protocol तो अलग है, क्योटो प्रोटोकॉल अलग है। Nagoya is called as Detroit of Japan, known for automobile. Osaka is called as Manchester of Japan, known for textiles. Hiroshima and Nagasaki are called as ruined cities of Japan. हाँ, बॉम्ब की वजह से ही जाना जाता है उनको, हिरोशिमा, नागासाकी। So all the 4 statements are correct. So option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following statements on China.
River Amur makes the boundary of Russia and China. Amur is a transboundary river. रशिया और चाइना की बाउंड्री बनाती. रिवर ह्वांगहे ड्रेन्स इन गल्फ ऑफ बोहाई. रिवर चांगजियांग ड्रेन्स इन ईस्ट चाइना सी. रिवर ज़ीजियांग ड्रेन्स इन साउथ चाइना सी. ठीक है, नहीं मैप में keep relating it to your atlas map. This is river Amur over here. Can you find Amur? It is going in this manner, not in this manner, I am sorry. River Amur. Can you find river Amur? Yes, it makes the border of Russia and China. Then river Huangho. This is river Huangho. It is going through Gulf of Bohai. Gulf of Bohai is an extension of Yellow Sea inward. Gulf of Bohai के चारों ओर locate the places over there. Dalian. Can you find Dalian? That is known for petrochemicals. Dalian के नॉर्थ में जाइए. Anshan, Fushun, Anshan, Fushun, मिला. Harbin, Anshan, Fushun, they are all steel, known for steel manufacturing over there. Am I clear on that? उसके और नॉर्थ में जाइए, you will find Manchurian plain. Manchurian plain मिला? Yes or no? इसी एरिया की बात कर रहा हूं मैं अभी. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मंचूरियन प्लेन. मंचूरियन प्लेन नॉर्थ में. देन रिवर चांगजियांग. दिस इज रिवर ओल्ड नेम यांगसिकियांग. रिवर ह्वांगहो पे देखिए, यू विल फाइंड द सिटी बीजिंग ओवर देयर. एंड चांगजियांग पे और यांगसिकियांग पे यू विल फाइंड द सिटी शंघाई. कैन यू फाइंड शंघाई? Then locate river Zhejiang over here. Zhejiang. Hong Kong. Can you find Hong Kong? Zhejiang. So river Amur drains in Sea of Okhotsk. This is river Huangho drains in Gulf of Bohai. Changjiang drains in East China Sea, and river Zhejiang drains over here in South China Sea close to Hong Kong. Am I clear on that? Right? पुरगा रिवर याद है? और पुरगा विंड याद है? लोकल विंड पुरगा -79 डिग्री सेल्सियस. यूका ट्राइब साइलेंट सुसाइड, सब भूल गए? That wind blows from Verkhoyansk mountain, moves in this manner, freezes all these rivers during winter. It strikes the Himalayas and not able to impact South Asia. ये सारी rivers freeze कर जाती. Are you getting that? So all four statements hold true. Option D, D for dog, shall be the correct answer. सब सही है ना? Yes. Consider the following statement. Pamir is known as roof of the world. Pamir not found by 4 mountain ranges. Hindu Kush. सुलेमान वहां तक जाता नहीं. हिंदू कुश, काराकोरम, तियानशान, कुल्लुन-शान. Right? Communism Peak is the highest peak of Pamir. Yes or no? Communism Peak is the highest peak. Pamir knot is formed by these 4 ranges: Tianshan, Kullun-shan, Hindu Kush and Karakoram. Amur Darya originates from Pamir, whereas Sir Darya originates from Tianshan. Tianshan river, Sir Darya पता है ना? That is originating from Tianshan, and the Amur Darya originates from
Amir. All four statements hold correct. Option D for dog shall be the correct answer. Consider the following lakes of Canada: Great Bear, Great Slave, Reindeer, Winnipeg. Kindly open the map of North America, everyone. Atlas है आपके पास, नॉर्थ अमेरिका का मैप खोल लीजिए. And start locating from north to south. थोड़ा सा नॉर्थ में, थोड़ा सा वेस्ट में, यू विल फाइंड ग्रेट बियर. अब डायगनली नीचे उतरते चले जाओ साउथ ईस्ट की तरफ, यू विल फाइंड ग्रेट स्लेव, रेनडियर, विनीपेग, उसके बाद विनीपेगोसिस. विनीपेगोसिस भी एक लेक है, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. So all these lakes, if they have to be arranged from north to south, they are written in order: Great Bear, Great Slave, Reindeer, Winnipeg. Canada is called a land of 10,000 lakes. So they are, order is 1, 2, 3, 4. Option A for apple shall be the correct answer. Am I clear on that? ठीक है, मिल गई. Consider the following statements: Florida State, Yucatan Channel, Windward Passage. Florida State connects Gulf of Mexico to Atlantic. Yucatan Channel separates Mexico from Cuba. Windward Passage separates Cuba from Haiti. Focus over here, everyone. See it written as state of Florida. This is Yucatan Channel. This is Cuba. This is Haiti. This water body over here is Windward Passage, not written over here. आपके एटलस में होगा. So Windward Passage over here, Florida State over here, Yucatan Channel over here. तो ये आपका है क्यूबा और ये रहा आपका मेक्सिको. दिस इज स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, बहामास, इसके बीच में स्टेट ऑफ फ्लोरिडा. दिस इज क्यूबा एंड दिस इज हैती, इसके बीच में विंडवर्ड पैसेज. So all the three statements over here hold correct. Option C for cat will be the correct answer. Oil fields and the country: अंडमान, दुखन, अल अहमदी, अहवाज. अहवाज तो हम लोगों ने भी लोकेट किया था, दैट इज इन ईरान. अल अहमदी इज इन कुवैत. Dukhan is in Qatar. Andaman is in Saudi Arabia. Those who are having the atlas, kindly open the map of West Asia. West Asia का मैप खुला, कतर को लोकेट कर लो सबसे पहले. लोकेट कतर. कैन यू फाइंड कतर? कतर में दुखन लिखा है. Kindly look over here. This is your Qatar. Qatar is having the oil field Dukhan, Dukhan. Okay. Kuwait को लोकेट करिए, and here it is given as Al Ahmadi. Not given? Okay. ये जो कतर वाला एरिया है, इसी में close to Qatar in Saudi Arabia locate Andaman, Tehran, Ras Tanura. Andaman, Ras Tanura, Al Qatif, Ras Tanura, Qatif, Andaman, Ras Tanura. These are all oil fields of Saudi Arabia.
Andaman is given, Al-Katif is given, Ras Tanura तो होगा यार, it is prominent, नहीं है? These are the oil fields located over here. So Andaman is in Saudi Arabia, Dukhan is in Qatar, Al-Hamdi is in Kuwait, Ahvaz in Iran. All four are correctly matched. So option D for dog, all four shall be the correct answer. देखिए 4 ऑयल फील्ड्स के नाम यहाँ लिखे, 2-4 अभी आपने पहले पढ़े। यूपीएससी के क्वेश्चन में जो भी आएगा यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस अगर उसने मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन बनाया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि ईरान से वो क्वेश्चन बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ईरान के आसपास से। जनरली जो चीज़ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होती है उस पर यूपीएससी उस साल क्वेश्चन नहीं बनाता, 2-3 साल के बाद झटका देता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Lesotho is a mountainous landlocked country entirely in South Africa. It is known as Kingdom in the Sky. Drakensberg Mountains are found in Lesotho. Lesotho is the highest diamond mine that is named as Letseng of the world. Highest लिखा, largest नहीं लिखा. Highest diamond mine. All the 4 statements over here are correct. Lesotho is a country. Lesotho and Swaziland, 2 countries are entirely in South Africa. So Lesotho is called as Kingdom in the Sky due to its height. Drakensberg mountain is found partly in Lesotho, not entirely, partly in Lesotho, and Lesotho is known for having the highest diamond mine of the world, and the name of the mine is Letseng. So all 4 statements are correct. Option D for dog is the correct answer to this particular question. हाँ पार्शियली, ड्रेकेंसबर्ग तो बहुत बड़ा है बेटा. River Mississippi is the largest river of North America. River Missouri is an important tributary of Mississippi. River Rio Grande makes the border of USA with Mexico. Yes? Check for that. Have a look over here. River Mississippi, River Missouri. This is River Mississippi, the longest and the largest river of North America. Missouri is the largest tributary of Mississippi. Other tributaries are Ohio, Wabash, Tanana, Kentucky. Ohio, Wabash, Tanana, Kentucky, Tennessee. These are all tributaries of Mississippi River. Largest जैसे गंगा रिवर सिस्टम है इंडिया का, सारी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं होंगी ना अभी, वैसे ये भी याद है तो सुनो. In the same manner it is Mississippi. Another river over here, Colorado, known for Grand Canyon. Another important river over here is Columbia, right? Columbia River, Missouri, Mississippi over here, and then river St. Lawrence. These are the prominent rivers of North America. Mississippi, Colorado, Columbia, St. Lawrence. Mackenzie आपने यहाँ लोकेट कर रही है. यूकोन और टनाना अलास्का में you have already located, right? कोलंबिया की एक ट्रिब्यूटरी है that is called a river गीला. कोलंबिया की एक ट्रिब्यूटरी है that is called a river snake, right? ये प्लेटू रीजन है नॉर्थ अमेरिका यूएसए का. दिस इज ऑल्सो अ प्लेटू रीजन. इसके बीच में डिप्रेशन है. आर यू गेटिंग दैट? दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेट बेसिन. ये सिएटल वाला पार्ट है जहाँ पहला कोरोना का केस रिकॉर्ड हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब चाइना के बाद. तो दैट इज सिएटल ओवर हियर. दिस इज कोलोराडो, लास वेगास, लॉस एंजलिस वाला एरिया. दीज आर ऑल प्लेटू रीजन. इसके बीच में ग्रेट बेसिन दैट इज सेंट फ्रांसिस्को, वेयर यू हैव लोकेटेड द रिवर साओ फ्रांसिस्को, नहीं सॉरी, San Joaquin and Sacramento. That is Great Basin over here. ये थोड़ा सा लो लाइन एरिया.
These two are plateau regions. Am I clear on that? This is called as fall line of USA. यहाँ पर आपके mountains हैं, Appalachians. इसके इधर this is called as a fall line. एक के बाद एक waterfall हैं भरे पड़े. Hydroelectric power generated in immense quantity over here, over there. That is called as fall line. Am I clear on that? River Mississippi is the largest river. Missouri is an important tributary. Rio Grande makes the border of USA and Mexico. All these statements are correct. Rio Grande Erie. This is Rio Grande. Border of USA and Mexico. इसी रिवर की बात करते थे डोनाल्ड ट्रम्प कि दीवार बनाएंगे पैसा मेक्सिको से लेंगे. याद है फर्स्ट टर्म में जब वो इलेक्शन जीते थे पहली बार तो क्लेम यही करते थे कि यहाँ पर हम रिवर बनाएंगे पैसा मेक्सिको से लेंगे ताकि मेक्सिको के लोग यूएसए में ना आ पाए. Consider the following pairs. Desert in the country. Again Middle East. Dasht-e-Kabir is in Iran or not? Rab al-Khali is in Saudi Arabia. Atacama Desert in Chile. All three are prominent deserts. Everyone knows them. So all three are correct. Option C, 𝐂𝐭 is the correct answer. Consider the following pairs. Daman Peak is in Iran. Communism Peak Iran में कहाँ बेटा? Daman Peak is the highest peak of Middle East. That is located in Iran. Communism Peak is in Central Asia. जो अभी आपने पामीर पे लोकेट देखा था. Elbrus is on Caucasus. Georgia, Armenia, Azerbaijan countries पे जो Caucasus mountains है. Mount Blanc is the peak in Alps, right? So Daman is in Iran correct, Communism Central Asia correct, Elbrus Caucasus correct, Mount Blanc Alps is also correct. All four are correctly matched. Mount Blanc is an horn. Mount Blanc is a horn. Mount Everest is a horn. Horn जानते हो कि भूल गए? हाँ चारों तरफ सर्क होता है, projected peak. So Mount Blanc is a horn. Mount Everest is a horn. All four are correctly matched. Option D, D for dog will be the correct answer. The remotest location of Earth in South Pacific Ocean is known as Point Nemo. INS Tarini यहाँ पे पहुँचा. Point Nemo. Option C, C for cat. Consider the following statements on Parvati-Arjun Ramsar site. This was important last year. It is located at on river Saryu in Gonda district, and there are two oxbow lakes. One is Parvati, one is Argatal, and it is called as Parvati-Arjun Ramsar site. Both the statement written over here are correct. That is option C, C for cat. Locations along LAC in Ladakh. Apurva, if there is something like that, I will check that and let you know. Check over here. Dawlat Beg Oldie, Depsang, Spangur Gap, Chusul, Pangong So Lake, Demchok. What should be the answer? आप बताइए. ये भी मैप पे देखना है. Dawlat Beg Oldie, Galwan Valley, Hot Spring, Gogra Hot Spring, Pangong So Lake, Chusul, Spangur Gap, Demchok. Dawlat Beg Oldie, ये ऊपर है, ये नीचे.
ये कोई एटलस नहीं बेटा, ये बहुत सारे मैप आपको गूगल पे पड़े हुए मिल जाएंगे, किसी को भी आप यूज़ कर लीजिए। काराकोरम पास उसके भी नॉर्थ में, काराकोरम पास ओवर हियर, देन डॉलर बे गोल्डी। Generally in one map you will not find everything, in any one map you will have to merge 2 or 3 maps and you will have to mark these places। अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन आप यहाँ से इसको याद कर लोगे और आपको याद रह जाएगा तो 24 मई तो बहुत दूर है। मैं चैलेंज करता हूँ इसको आज रात भर बैठ के रटो सिर्फ इतने को, और 10 मई के पहले भूल जाओ। आई चैलेंज दैट, नहीं याद होगा। और सिर्फ इतना ही अगर आप याद करें 6, और इनको आप याद करके एकदम रट्टा मारिए आज से लेके कल तक, और उसके बाद 10 दिन मत पढ़िए, और 10 दिन के बाद खुद चेक कर लीजिए कि आपको याद है, नहीं याद होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, ये था पहले कि ये था बाद में, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। मैप खोलिए उसको मार्क कर लीजिए, एक बार मार्क कर लेंगे याद हो जाएगा। दे आर रिटन इन ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी फॉर बॉय इज द करेक्ट आंसर। मुझे भी याद नहीं रहता, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। सच है भाई, मैं इंसान ही तो हूँ यार, इससे ज्यादा इंसान क्या सच बोलेगा। मैं भी तो इंसान हूँ ना, तो मेरे से भी भूल जाता है कि क्या ऊपर था, कंप्यूटर थोड़ी ना दिमाग में बसा हुआ। तो फैक्चुअल डेटा तो इंसान के दिमाग से उतरेगा ही उतरेगा, इसलिए मैंने आसान करने के लिए क्वेश्चन ऐसा बनाया कि आप लोग को आसानी से बता दूं। 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन बी बिफोर बॉय इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्रोमिनेंट लेक्स अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कोल्लेरू इज अ फ्रेश वाटर लेक, yes or no? Tilka is a brackish water lake. Pulicat is a fresh water. Pulicat is a saline water lake, brackish water ही है। So Pulicat is connected to Arabian Sea, sorry, Bay of Bengal. So Kolleru is a fresh water is correct. Chilka brackish water is correct. Pulicat is not a fresh water lake. However, it is located between Andhra and Tamil, but it is not a fresh water. So 1 and 2 are correct. Only 2, option B before boy should be the correct answer. Consider the following statements on Indus River system. Indus flows between Jaskar and Ladakh. Yes. Shyok flows between Ladakh and Karakoram. ये तो लोकेट किया होगा, नहीं? Physical map of India. So this is river Indus. Indus is over here, and this is river Shyok, right? Here it is Karakoram, here it is Ladakh, and this is Jaskar. So between Ladakh and Jaskar, Indus flows. North of Ladakh, river Shyok flows. Shyok later on joins river Indus. Indus flows between Jaskar and Ladakh. Shyok flows between Ladakh and Karakoram. Gilgit confluences with Indus on its right bank. Gilgit north से आ रही तो Indus के right में जाएगी. So all 3 are correct. Option C, C for cat, will be the correct answer. Consider the following peaks of Karakoram: Saltoro Kangri, Gasherbam, Haramos, Dastegil Sir. Arrange them north to south. यार कुछ याद भी रहता मुझे. Arrange them north to south.
मैप देख लो, एवरी एटलस इज हैविंग अ डिटेल मैप ऑफ कश्मीर, ओपन दैट, उसमें यू विल फाइंड दस्तगील सर, कैन यू फाइंड नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा दस्तगील सर, कैन यू फाइंड सर, SAR सर, ठीक है। उसके साउथ में यू विल फाइंड हरामोश, कैन यू फाइंड दैट। उसके बाद मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, यू विल फाइंड गशेरबम, गशेरबम मिला। मूव स्लाइटली अगेन बैक टू टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, यू विल फाइंड मशेरबम, हाँ दो हैं लेकिन गशेरबम है आसी पास ना। उसके बाद थोड़ा सा आप वेस्ट की तरफ मूव करिए, यू विल फाइंड मशेरबम, अगेन मूव टुवर्ड्स ईस्ट, यू विल फाइंड साल्टोरो कंगरी, साल्टोरो कंगरी, कैन यू फाइंड दैट। सो इफ यू हैव टू अरेंज देम नॉर्थ टू साउथ, साल्टोरो कंगरी नहीं मिला, ठीक है वही मान लो। North to south, if you will arrange them, you will find northernmost at Dastagil Sar, followed by Haramosh, followed by Gasherbam, followed by Saltoro Kangri. Gasherbam किसके ऊपर है? हरामोश के? नहीं नहीं नहीं, हरामोश is northern side, followed by Gasherbam, followed by Masherbam, followed by Dastagil Sar. बेटा आप इनके पॉइंट्स के ना वो लैटिट्यूडनल लोकेशन गूगल पे जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। The topmost is Dastagil Sar, followed by Haramosh, followed by Gasherbam, followed by Saltoro Kangri. So it's 4, 3, 2, 1. Option A for apple. River Chenab is formed by the confluence of Chandra and Bhaga. Consider, ये तो statement में. Consider the following. Chandra and Bhaga confluence at Tandi in Lahore Spiti. Bhaga originates from Surastal. Chandra originates from Chandratal. Chenab is the right bank tributary of Satluj. चेनाब इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, कोई डाउट नहीं है। चंद्रा एंड भागा कॉन्फ्लुएंस एट टांडी इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई डाउट है। भागा ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूरजताल नियर बारालाचा एंड चंद्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रताल दैट इज नियर कुंतम पास, राइट। ऑल फोर स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू, करेक्ट। 1 2 3 4 ऑल फोर, ऑप्शन डी फॉर डॉग शैल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Consider the following statement. 10-degree channel separates Andaman and Nicobar. 9-degree channel separates Minicoy and Lakshadweep. 8-degree channel separates Minicoy from Maldives. 6-degree channel separates Great Nicobar from. All four correct. Option D for dog. Consider the following statements. 𝐂𝐭 channel separates North Andaman from Myanmar. 𝐂𝐭 channel separates Andaman group of islands from Myanmar. Correct or not? Maya channel separates North Andaman from Middle Andaman. Maya Bandar port over there. North Andaman, Middle Andaman के बीच में locate करिए, you will find Maya Bandar port, and the water body over there is called as Maya channel. It separates North Andaman from Middle Andaman. Duncan Passage separates South Andaman from Little Andaman. Yes. Cachal Island is separated from Little Nicobar by Sombrero Channel. Sombrero Channel separates Cachal Island from Little Nicobar, and St. George's Channel separates Little Nicobar from Great Nicobar. नहीं, कार निकोबार ऊपर है, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। कार निकोबार, कच्चल आइलैंड, लिटिल निकोबार, कच्चल आइलैंड, सॉरी कार निकोबार, कच्चल आइलैंड, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट। कच्चल और कार के बीच में कोई प्रोमिनेंट वाटर बॉडी नहीं जिसका नाम बहुत है तो, लेकिन सोमरेरो चैनल इज प्रोमिनेंट, सेंट जॉर्जेस चैनल इज प्रोमिनेंट। सोमरेरो इज बिटवीन लिटिल निकोबार एंड कच्चल आइलैंड, and Georges is between
लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार. Sombrero Channel separates Cachal Island from Little Nicobar. कार निकोबार फ्रॉम, हाँ तो सही करना पड़ेगा, है तो बीच में, आपको देखना ये. एक बच्चा क्लेम कर रहा है, देख लो, 1 मिनट लगेगा. देखिए, दिस इज लिटिल अंडमान, दिस इज साउथ अंडमान, ये वाटर बॉडी डंकन पैसेज. उसके बाद जब आप निकोबार में शुरू करेंगे, यू इनिशियली गेट कार निकोबार, उसके बाद यू गेट कच्चल आइलैंड, कहाँ गया, ये रहा कच्चल आइलैंड, ठीक है. देन यू गेट, ये रहा कच्चल आइलैंड, यू गेट लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार. तो दिस इज कार निकोबार, कच्चल आइलैंड, this one is little Nicobar, this is great Nicobar, right. So water body over here Cachal Island और इसके बीच में, this water body is Sombrero Channel, and this water body over here is Georges Channel. Here it is Duncan Passage, ठीक है. नॉर्थ सेंटिनल साउथ सेंटिनल यहाँ पर, यहाँ पे जाना मना है. साउथ अंडमान के इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैरन आइलैंड, एक्टिव वोल्कन, right. So all statements are correct, all 5, option D, D for dog shall be the correct answer. South Sentinel, Little Andaman, कार निकोबार, अरेंज द अबव आइलैंड नॉर्थ टू साउथ, अभी तो हो ही जाएगा ना. सबसे पहले साउथ अंडमान, सेंटिनल, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, 1 2 3 4, ऑप्शन सी, सी फॉर कैट. Consider the following statement, बनियाल, लिपुलेक, नाथुला, बमला, अरेंज देम ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, हाँ ईस्ट टू वेस्ट, arrange them from east to west. Bamla is where? Nathula, Lipulek, बनियाल, ठीक है ना. तो अपने आप अरेंज हो जाएगा. अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, देन J&K. So it's 4 3 2 1, option A for apple shall be the correct answer. Consider the following statement, Ladakh receive very little precipitation in the form of rainfall. Ladakh falls in the rain shadow region both from north and south. Yes, north Karakoram higher, south Jaskar higher. So both the statements are correct, and statement 2 explains the statement 1. River Hindon, it was there in news last year, this year again it has been in news. गाजियाबाद ये बगल में है, रिवर हिंडन, राइट. एंड व्हेन यू विल बी क्रॉसिंग दिस रिवर, आपको रिवर नहीं दिखेगी, बाकी सब दिखेगा. नाला भी नहीं दिखेगा बेटा, नाला भी अच्छा होता है, उसमें कुछ तो होता है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है. It flows through Ghaziabad and is a tributary of Yamuna. On paper, it is a tributary of Yamuna. It originates in the Shivalik of UP. Yes. यूपी में शिवालिक है, कहाँ पे? ईस्ट यूपी में, और वेस्ट में नहीं है. It originates from Shivalik of UP close to Saharanpur region, right? Both the statements are correct. It is a seasonal river, correct. All 3 are correct, so option C, C for cat is the correct answer. Consider the following peaks. Consider the following peaks and the range. Indrasan is on Himalayas. कहाँ पर है? Which is state? उत्तराखंड में इंद्रासन कहीं तो हो गई. गॉर्डन ऑस्टिन K2,
Karakoram correct. Anayamudi Western Ghats, Mahengiri Eastern Ghats, all four are correctly matched. Indrasan is in Himachal Pradesh. River Ganga, tributary, state of confluence. सिटी ऑफ कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए. हम सॉरी क्वेश्चन में मिसप्रिंट है स्टेट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, इसको ठीक कर लीजिए. सिटी ऑफ कॉन्फ्लुएंस. रामगंगा एट कन्नौज. रामगंगा ज्वाइंस गंगा एट कन्नौज. यस और नो? हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है. रामगंगा कॉन्फ्लुएंस विद गंगा एट कन्नौज. अभी कोई बोला तो था बीच में हम सारी ट्रिब्यूटरी बता देंगे. गोमती कॉन्फ्लुएंसेस विद गंगा इन वाराणसी. गोमती फ्लोज थ्रू लखनऊ. लखनऊ में गंगा कब आई? लखनऊ में गंगा होती तो मैं वहां पैदा होता. गोमती वाराणसी करेक्ट और नॉट? नहीं, वाराणसी. हाँ हाँ, तो बनारस के पास ही तो है ना, डिस्ट्रिक्ट तो वाराणसी लग रहा है ना. गाजीपुर अलग है, लेकिन यहाँ एक कॉन्फ्लुएंस है, डेट इज गाजीपुर और वाराणसी. मार्कंडे महादेव जी टेम्पल ना, वहीं पर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है ना गोमती गज से. घाघरा छपरा. घाघरा छपरा, डेट इज बॉर्डर ऑफ यूपी एंड बिहार. दामोदर हावड़ा करेक्ट. So Ramganga at Kannauj is correct. Gomti Varanasi, Ramganga Gomti Ghagra. गंडक. गंडक कहाँ कॉन्फ्लुएंस करती है? रिवर गंडक कॉन्फ्लुएंसेस विद गंगा. यस और नो? पटना. गंडक. देन सोन. पटना में ही है, पटना के पास ही है मतलब. सोन. रामगंगा गोमती घाघरा गंडक. बूढ़ी गंडक तो छोटी सी रिवर है. कोसी. कोसी का कॉन्फ्लुएंस गंगा के साथ कहाँ पर है? सही कह रहा है वो, अगड़िया. अगड़िया. आर यू गेटिंग दैट? यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स का ऑर्डर. उसने पूछा गोमती घाघरा गंडक कोसी. अब इनका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा. इट कैन वर्क ऑन दैट. ऑल फोर आर करेक्टली मैच. ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग. एक बार आप चेक कर लीजिएगा गोमती का वो डिस्ट्रिक्ट वाराणसी की जगह चेंज हो रहा है क्या, चेक कर लीजिए ऑनलाइन. क्या है? अच्छा कर लेना. मोबाइल नहीं है, जिंदा कैसे तुम? Consider the following statements on Sambar Lake. It is India's largest inland saltwater lake. It is surrounded by Aravallis and it is an artificial lake. Man-made. आर्टिफिशियल है? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार. सांबर लेक आर्टिफिशियल हो गई? इट इज अ नेचुरल लेक. सांबर लेक इज नेचुरल लेक surrounded by Aravallis. 1 is correct, 2 is correct, 3 is not correct. Only 2, option B, B for boy. Consider the following statements on Run of Kutch of India. It exists entirely in the state of Gujarat. राजस्थान में है कि नहीं? Run of Kutch exists only in 2 places. One is Gujarat, other is Pakistan. And the question is on India. So it is only Gujarat. Kutch Highland separates Great Run in the north from Little Run in the south. Kutch Highland separates that Great Run north में, Little Run south में. इसके दो पार्ट हैं, Great Run, Little Run. So both the statements are correct. Option C, C for cat is the correct answer. Consider the following statements on Vadavan Port. It was initially a satellite port of Nhava Sheva. Nhava Sheva क्या है? JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट.
उसी को नवा शेवा कहते हैं. It will be the third major port in Maharashtra. Bombay, Nhava Sheva, Vadavan. Maharashtra will be the second state in India to have three major ports. और दूसरा कौन सा? Tamil Nadu having Chennai and now Chidambaram and Tuticorin. So after Tamil Nadu, Maharashtra will be the second state to have three international seaports. So all three statements are correct. So all three options C, C for cat will be the correct answer. Consider the following statements on Galatia Port. It shall be a transshipment port developed on Great Nicobar. River Galatia flows through the region. Galatia Bay पे मिलती है. National park of the region is also known as Galatia National Park. Galatia Bay is known for leatherback turtles. All the statements are correct. So all five, option D, D for dog will be the correct answer. Consider the following hills of Arunachal: Dafla, Miri, Abor, Mishmi. If Indian geography is weak, you can only go through NCERT of class 9th and NCERT of class 11th. Indian geography NCERT is class 9th की NCERT और class 11th की India physical. But that will be good for 2027 now. For 2026 now you can't do anything. Arrange them from west to east. The order is Dafla, Miri, Abor, Mishmi. So 1, 2, 3, 4 option A. Consider the following statements on northeast of India. बताओ. Assam shares border with all northeastern states except Sikkim. Correct or not? Huh? Correct है? Assam is having border with Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya सबके साथ है. Meghalaya shares border with Tripura and Manipur. Meghalaya is having border with Tripura and Manipur? नहीं ना? है? नहीं है. Meghalaya is not sharing any border with Tripura and Manipur. Manipur shares border with Tripura. Manipur is not sharing border with Tripura. ये तो हमारे देश के स्टेट्स के बारे में हाल है आप लोग का. आपको लगता है कि आप नॉर्थ अमेरिका यूरोप का आंसर करके आओगे. मतलब मणिपुर का बॉर्डर त्रिपुरा से मिल रहा है कि मिल रहा है, इस पर डाउट हो रहा है. त्रिपुरा और मणिपुर मेघालय से मिल रहे नहीं मिल रहे, इस पर दिमाग काम नहीं कर रहा है. आपको लगता है कि डुलुथ को और मिलवॉकी और शिकागो हम सब कराएंगे. इसको दिखाने की जरूरत है. Statement 2 and 3 are wrong. Statement 1 is correct. So only one option A for apple is the correct answer. Consider the following capital cities: Itanagar, Kohima, Imphal as well. Arrange them from west to east. West to east आपको arrange करना है. West to east. ये ऑर्डर में नहीं लिखा तुम लोग. हाँ, वेस्ट टू ईस्ट में वेस्टर्न मोसेस एजवाल फॉलोड बाय ईटानगर फॉलोड बाय इम्फाल. पहले मणिपुर आएगा देन कोहिमा. 4132 4132 ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following state does not have contiguous borders with Puducherry? Which of the following states do not have contiguous borders with Puducherry? Tamil Nadu में it is Puducherry itself. आंध्र प्रदेश यनम. तमिलनाडु में कराईकल भी है. केरला में इट्स माहे. कर्नाटका में कुछ नहीं. So option A for apple. Karnataka is not having any contiguous borders with Puducherry. Consider the following statements. ब्रेक लेना है बेटा. इस क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, 85 तक तो कर लो, 2 क्वेश्चन और कर लो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज नो इंटरनेशनल बॉर्डर. All north eastern states have international borders. Sure on that?
कोई ऐसा स्टेट, हाँ, all northeastern states are having international borders, yes or no? Assam and Mizoram have international border with 2 countries. कौन सी 2 कंट्री के साथ है? आसाम का भूटान और मिजोरम का, सही है. सिक्किम एंड अरुणाचल हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद 3 कंट्रीज. सिक्किम का बॉर्डर नेपाल, चाइना, भूटान है कि नहीं? अरुणाचल का चाइना, म्यांमार, भूटान. ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. अच्छा, पहला गलत है. ओनली 2, ऑप्शन बी फॉर बॉय. Consider the following statements. Only 4 states of India have borders with Bangladesh. West Bengal, Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. 5 है, तो ये गलत हो गया. वेस्ट बंगाल हैज मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विद बांग्लादेश. सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल का ही है ना. आसाम हैज मिनिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर विद बांग्लादेश. Minimum is Assam, maximum is West Bengal. So statement 2 and 3 are correct. 1 is wrong. So only 2, option B for boy is the correct answer. For how long do you need break? Aren't? नहीं, आप लोग को उसके बाद बैठना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद हम लोग के पास 20-22 क्वेश्चन और हैं जो हम लोग को आज कंप्लीट करने हैं. तो आप लोग ब्रेक ले. कंप्लीट तो 500 नहीं हो पाएंगे लेकिन ब्रेक ले लीजिए. 4:30 है, बाकी का देखते हैं कैसे होगा. अभी स्लॉट नहीं है आप लोग के किसी भी उसमें. चलिए ठीक है, टेक अ ब्रेक. असेंबल आफ्टर 20 मिनट्स. नहीं, आप लोग को किसी को कुछ खाना पीना है? ले लो. अच्छा चलो, 20-25 मिनट में आ जाना.
सी टू दैट कि क्या होगा. टाइम इज नॉट परमिटिंग ना, संडे को भी स्पेस एवरीथिंग, विल सी टू दैट, देखेंगे उसका क्या करना. सो वी आर स्टार्टिंग बैक फ्रॉम ब्रेक, starting with question number 386. Consider the following states bordering Bhutan: Sikkim, West Bengal, Arunachal, Assam. Arrange them in increasing order of border length with Bhutan. Minimum border is with which state? Bhutan. Now look, have a look over here. Sikkim is over here, Arunachal is over here, West Bengal is over here, Assam is over here. अब देखो, so minimum is Sikkim, then Arunachal, then West Bengal, and then Assam. One, two, three, four ही होगा. West Bengal is more than Arunachal. 1, 2, 3, 4. Option C, C for cat, is the correct answer. Consider the following statements on Nepal. River Kali makes the border of India and Nepal. Bihar has maximum length of border with Nepal among Indian states. Maximum border is with Bihar. West Bengal and Sikkim have almost similar length of border with Nepal. West Bengal और सिक्किम लगभग सिमिलर ही है. West Bengal and Sikkim almost similar length of border with Nepal. Nepal has more length of border with India than China. उत्तराखंड से भी है, सिक्किम से भी है. Nepal is having more border with India than China. All four statements are correct. So all four, option D, D for dog. Which state of India has maximum length of border with China? No doubt in that. Option C, Arunachal Pradesh. If one has to move from Leh to Kolkata, what is the minimum number of states that one has to cross, counting all the states of journey? फिर से काउंट करो. Count again. Count again. कैसे मान लेंगे आप? Ladakh is a union territory, so Ladakh will not be counted as a state. So हिमाचल से सीधे यूपी आई, उत्तराखंड जाने की क्या जरूरत है?
हिमाचल यूपी, हाँ हिमाचल क्या कर सकते हैं, कोलकाता जाना है ना आपको, ले से, so you will enter Himachal, from Himachal you will enter यूपी, यूपी से अब चाहे आप बिहार होके चाहे झारखंड होके वेस्ट बंगाल पहुंच जाइए, नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी 4। सो हिमाचल से कहाँ जाएंगे, लद्दाख से आप जाएंगे पंजाब, और वहां से किधर से आएंगे, कंसिडर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, अटल टनल हिमाचल प्रदेश, करेक्ट और नॉट, सेडमोर टनल कश्मीर, सेला टनल अरुणाचल, चिंकुला टनल हिमाचल एंड लद्दाख, चिंकुला इज अंडर कंस्ट्रक्शन, हिमाचल एंड लद्दाख दोनों जगह कनेक्ट करेगा वो। ऑल फोर आर करेक्टली मैच, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग शैल बी द करेक्ट आंसर। मनाली ले हाईवे जो है वो विंटर्स में बंद हो जाता है, अभी खुला नहीं है, अभी खुलेगा, जैसे खुलेगा मैं जाऊंगा, तो अभी वो विंटर्स में क्लोज रहता है। तो वंस द टनल गेट्स कंस्ट्रक्टेड, राइट, वो देखिए मूवी 3 इडियट्स, जहाँ से वो यू टर्न लेता है, ये रैंचो का पता चल गया, दैट इज डारचा ब्रिज, तो अभी आप डारचा ब्रिज तक जा सकते हैं, उसके बाद रास्ता कनेक्टिविटी नहीं है। So once this tunnel gets constructed, then after crossing Atal Tunnel, through this tunnel you will directly reach Ladakh. All weather road throughout the year, operative 365 days. अभी तो अकेले ही सोचा बेटा, तुम्हारे प्रीलिम्स के पहले होऊंगा मैं, प्रीलिम्स के बाद मेरा अभी पढ़ लो यार, ऑल फोर ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग, तुमसे जो दूसरा कमिटमेंट हुआ ना वो पूरा करेंगे हम लोग। प्रीलिम्स दे लो उसके बाद ना, तो प्रीलिम्स के पहले 391 प्लेसेस लोकेशन, सुदर्शन प्रीलिम्स क्रैक करना है ना, सुदर्शन से टू गुजरात, करेक्ट और नॉट, इट इज मेड टू कनेक्ट द्वारिका, बेट द्वारिका विद द मेनलैंड, सुदर्शन से टू कुलाशेखरपट्टिनम तमिलनाडु, व्हाट इज दैट, द न्यू सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड ऑफ इसरो, सोरवेट टेम्पल उत्तर प्रदेश, सोरवेट टेम्पल अगेन वाराणसी गाजीपुर, और गाजीपुर है बेटा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा वेद गोमती इज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू वाराणसी, डिस्ट्रिक्ट इज गाजीपुर, राइट, सोरवेट टेम्पल उत्तर प्रदेश। वो जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है ना, उसमें उसको करेक्शन कर लीजिएगा, वाराणसी इज अ प्रोमिनेंट प्लेस, और वाराणसी से तो सिर्फ 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है, 40 किलोमीटर्स, बट द डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट्स गाजीपुर, मेक दैट करेक्शन ओवर देयर इन दैट क्वेश्चन। सोरवेट टेम्पल इज इन उत्तर प्रदेश, दैट इज इन वाराणसी, हाँ अच्छा ओके। T50 tunnel, yeah, the railway link that is connecting Srinagar, right, जो रेलवे लिंक बना है, रेलवे ट्रैक, उस पर T50 टनल है, लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, 12 point something kilometers, all four are correctly matched, option D, D for dog is the correct answer. Consider the following passes, Thalghat is Mumbai to Nasik, Bhorghat Mumbai Pune, Palghat Palakkad to Coimbatore, and Khandwa Gap is on Satpura, Khandwa Gap is on Satpura, MP. All four are correctly matched, option D, D for dog is the correct answer. Consider the following and arrange them south to north, Harishchandra range, Balaghat range, Satmala range, Ajanta range.
So correct answer is Harishan range is southernmost, followed by Balaghat, Satmala and Ajanta. Option C, C for cat is the correct answer. Consider the following statement: Bundelkhand lies between Betwa and Ken. Bhandev lies between Ken and Rihan. And Baghelkhand lies between Rihan and Son. All three statements hold correct. Option C, C for cat is the correct answer. Consider the following pairs: Garjat Hill is in Odisha, Ramgarh in Chhattisgarh, Rajmahal Hills in Jharkhand. Yes, again all three are correct. Option C, C for cat. Satpura are the highest mountains of central India. Dhupgarh, Panchmadi, right? Dhupgarh is the highest peak of Satpura. Vindhyas are the longest mountains in central India. The highest peak of Vindhyas is Sadbhavna Peak, Goodwill Peak. Yes, Sadbhavna Peak, Goodwill Peak, that is located in Madhya Pradesh. That is the highest peak. All four statements hold true. Option D, D for dog is the correct answer. Yes. बेटा रिहंद सोन दोनों के तरफ वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेतवा, केन, रिहंद, सोन. इफ यू ड्रॉ दिस रिवर्स इन ऑर्डर, so बेतवा, केन, रिहंद, सोन, राइट. दिस इज योर बुंदेलखंड. दिस इज योर भांडेर जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है, और दिस इज योर बघेलखंड. तो बघेलखंड में अगर लिख के आ जाता है, रिहंद नहीं आता है, सिर्फ सोन लिख के आता है, इवन देन इट विल बी करेक्ट, राइट. Dodabetta is the second highest peak of South India in Tamil Nadu. Anayamudi is the highest in Kerala and South India. Both are correct. Option C, C for cat is the correct answer. As per the new calculation, the total coastline of India has increased to 11098 kilometers. The coastline of Puducherry shrank by few kilometers. But this is the only place जिसकी coastline shrank कर गई. All other states, the coastline increased. For Puducherry, it shrank. पहले कोस्टलाइन ऐसे ऐसे थी, अभी भी ऐसी है, इसको इन्होंने ऐसे नाप लिया था, राइट. अब इन्होंने ऐसे नापना शुरू कर दिया. पुडुचेरी को भी ऐसे नापा था, लेकिन पुडुचेरी में हेवी इरोजन हो गया. हेवी इरोजन होने की वजह से जो ऐसे ऐसे इंडेंटेड था, ये हो गया सीधा. तो पहले वो थोड़ा कर्व लेके हो रही थी, अब वो सीधा नाप गई, तब वो 4.9 किलोमीटर कम हो गई कोस्टलाइन पुडुचेरी. Consider the following: it is not rivers, these are the mountains. Nallamala, Palkonda, Jawadi, Chevroy. Arrange them north to south. 1, 2, 3, 4 is the correct sequence. Nallamala, Palkonda, Jawadi, Chevroy. Chevroy and Jawadi are in Tamil Nadu. Nallamala and Palkonda are in Andhra Pradesh. Consider the following statements: Western coastal plains are highly indented with coastal creeks and backwaters. Western coast of India is formed by submergence and erosion. Is this the correct explanation? Yes. So option A, both the statements are correct, and statement 2 explains the statement 1. Consider the following pairs: Pamban Island is in Tamil Nadu, Vaipen is in Kerala, Pigeon Island is in Karnataka, Pigeon, Udupi ये सब कर्नाटका में, Vaipen, Wellington ये भी केरला में, Wheeler Island, Chandipur, Dr. APJ Abdul Kalam, Odisha. All four are correctly matched. Option D, D for dog, shall be the correct answer. Consider the following mountain peaks of Greater Himalayas: Dhaulagiri, Annapurna, Mansalu, Makalu. Dhaulagiri is westernmost. नहीं सब नेपाल में. These all mountains are in Nepal. None of them is in India. Dhaulagiri is westernmost, followed by Annapurna, then Mansalu. Makalu is easternmost. गौरी शंकर भी है, माउंट एवरेस्ट भी है, ठीक है.
So order is 1, 2, 3, 4. Option B for boy. Consider the following statements. Banas is a left bank tributary of Chambal. Chambal, Sindh, Betwa and Ken are right bank tributaries of Yamuna. Chambal, Sindh, Betwa, Ken Yamuna में साउथ से मिलती है, राइट बैंक होगा. रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक are left bank tributaries of Ganga. All statements are correct. Option C. C for cat is the correct answer. Consider the following statement. Mahi has the largest catchment area in Rajasthan. माही का कैचमेंट एरिया राजस्थान में है, गुजरात में, एमपी में. मैक्सिमम इज इन राजस्थान. नर्मदा है लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन मध्य प्रदेश. और कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र. मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश. तापी है लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन महाराष्ट्र. All three statements hold true. Option C, C for cat is the correct answer. Consider the following pairs on rivers confluencing with the river Alaknanda. Panchprayag, Dhauli Ganga at Vishnu Prayag, Nandakini at Nandaprayag, Pindari at Karnaprayag, Mandakini at Rudraprayag and Bhagirathi at Devprayag. All five are correctly matched. Yes? Dhauli Ganga, Nandakini and Pindari, first three. Dhauli Ganga, Nandakini and Pindari, 1, 2, 3. These are left bank tributaries of Alaknanda. Mandakini and Bhagirathi are right bank. Right? Here answer is D, all five. Consider the following statements. Kaimur is the eastern extension of India's extending up to Bihar. Harshnath and Kumbhalgarh hills are the name of Aravallis in Rajasthan. Garo, Khasi and Jaintia are part of Peninsula mountains. Meghalaya wale. All three are correct. Garo, Khasi and Jaintia are not a part of northeast. All three, option C, C for cat is the correct answer. Consider the following statement. Gavilgarh, Maikal, Mahadev. वेस्ट टू ईस्ट इसी ऑर्डर में. गाविलगढ़, मैकाल, नहीं, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल. 1, 3, 2. गाविलगढ़ followed by महादेव followed by मैकाल. 1, 3, 2. Option D, D for dog is the correct answer. Consider the following statements on चार धाम यात्रा of उत्तराखंड. चार धाम यात्रा में चार जगह कौन सी हैं? The highest among them is Kedarnath and the place having minimum height is Badrinath. Correct or not? Sure? Both the statements are correct. Option C, C for cat is the correct answer. और बाकी दोनों कहाँ पर है? मतलब ऑर्डर बताना बेटा. हाईएस्ट केदारनाथ हो गया, लोएस्ट बद्रीनाथ हो गया. गंगोत्री यमुनोत्री में कौन ज्यादा हाइट पे? गंगोत्री हायर देन यमुनोत्री. कुछ नहीं मिलेगा गूगल पे. सब जितनी साइट खोलोगे सब पे अलग आंसर मिलेगा. तो इसलिए अगर आपको आंसर सही देखना है तो चार धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उस पे देखिएगा, या उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, उस पे देखिएगा. यू विल गेट द आंसर. ISS केदारनाथ फॉलोड बाय गंगोत्री फॉलोड बाय यमुनोत्री फॉलोड बाय बद्रीनाथ. एम आई क्लियर ऑन दैट? भगवान शिव सबसे ऊपर बैठे, उनकी जटाओं से निकली गंगा, गंगा की बहन यमुना, भगवान बद्रीनाथ जग के पालनहार विष्णुदेव सबसे नीचे पब्लिक के पास. दैट इज ऑर्डर. एम आई क्लियर ऑन दैट? You all are having this handout also? Question number 409. Map work over. Now let us do something else. Consider the following statements on El Nino ENSO. The onset of El Nino and La Nina can be declared on the basis of Ocean Nino Index ONI. Ocean Nino Index, yes or no? ONI compares the 3-month average sea surface temperature in East Central Tropical Pacific with 30 years average. ध्यान से देख लो स्टेटमेंट सही है कि नहीं. Compares the 3-month average sea surface temperature in the East Central Tropical Pacific with 30 years average.
ठीक है. It measures the temperature in this zone only, East Central Pacific, that is a tropical region, and with 30 years average. El Nino ONI value must exceed 0.5 degrees Celsius or more at least 5 times consecutively. To declare an event as El Nino, for 5 times the value should be 0.5 degrees Celsius, more than that or more than that. For La Nina it should be minus 0.5 or less than that for 5 consecutive readings, right. Super El Nino is declared when ONI value exceeds 2 degrees Celsius. तो कभी अगर ONI का वैल्यू 2 डिग्री से ज़्यादा हो गया, that event is called as super El Nino, right. All 5 statements hold true over here. ONI पता है, Ocean Nino Index declared by NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, that is an arm of USA. ONI Ocean Nino Index declare करता है. They compare it as per 3 months average. तो 3 month का एवरेज 3 महीने का एवरेज लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च. अगली रीडिंग फरवरी मार्च अप्रैल, देन मार्च अप्रैल मई जून, मई जून जुलाई, इस तरह ओवरलैपिंग. 5 कंसेक्यूटिव रीडिंग इफ दे आर मोर देन 0.5 डिग्री सेल्सियस एल नीनो डिक्लेयर्ड. 5 कंटिन्यूअस रीडिंग लेस देन 0.5 ला नीना डिक्लेयर्ड. वैल्यू मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस सुपर एल नीनो. नहीं, 5 कंसेक्यूटिव रीडिंग होगी तब हम एल नीनो को डिक्लेयर करेंगे. उसके पहले न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल मिलेगा एल नीनो फॉर्म हो रही है, नहीं हुई. सुपर एल नीनो के चांसेस है, अभी डिक्लेयर नहीं. Am I clear? So all 5 statements are correct. Option D for dog is the correct answer. सुपर एल नीनो तो एक ही बार अगर 2 डिग्री मिल जाएगा तो डिक्लेयर कर देंगे. इतना वेरिएशन होना बहुत रेयर होता है, बहुत आसान नहीं. Consider the following statements on planetary boundary layer. Planetary boundary layer is what? The height up till which the moving air is affected by the friction from the ground. Air ऐसे मूव कर रही, उसको ग्राउंड फ्रिक्शन दे रहा. So the height up till which the air gets affected by the friction from the ground, that is called as planetary boundary layer. That is planetary boundary layer height. It is the lowest layer of the troposphere where the wind is influenced by friction. It is the height. Its height is less during night cold season and high during day warm season. Winds above this layer are termed as geostrophic wind. Yes, इसके ऊपर जो winds हैं उन्हीं को geostrophic wind कहते हैं. Subtropical westerly jet stream, they are moving over and above that. हाँ, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है ना, जो आपकी हाइट्स होती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल की. ये तो कह रहा है कि वार्म सीजन में ज़्यादा हो जाएगा, विंटर सीजन में कम हो जाएगा. जियोस्ट्रॉफिक तो एक फिनोमिना है, व्हेन द विंड गेट्स स्टार्ट ब्लोइंग पैरेलल टू आइसोबार. हाँ, तो वो तो कहीं भी फ्लो कर सकता है. जेट स्ट्रीम के भी एक हाइट थोड़ी ना, वो भी वेरिएबल. स्ट्रेटोस्फीयर पे नहीं, ट्रोपोस्फीयर का फिनोमिना है जियोस्ट्रॉफिक विंड. हाँ, तो व्हेन द सेल्स विल कंप्रेस, दैट जेट स्ट्रीम मूव साउथवर्ड और सॉरी डाउनवर्ड, ऊपर नीचे वेरिएट करता रहे. So all 3 statements are correct. Option C, C for cat. Consider the following statements on artesian well. It is possible in case of confined aquifer as well as unconfined aquifer. Huh? Okay. आर्टिजन वेल हम लोगों ने पढ़ा है फाउंडेशन, नहीं पढ़ा? जो फाउंडेशन में वही तो बोलेगा. फाउंडेशन में पढ़ा हम लोग नहीं, तुम तो पीएमपी में थे ना. और फाउंडेशन का कोई बच्चा है? This is the surface of earth. This is your mean sea level. Here also, this is the mean sea level, right?
and this is the surface of earth. So mean sea level is over and above the surface of earth, but here the land is higher, and so the sea level is not intruding into this particular region. So what happens over here? Here, this is the aquifer, water table. इसके ऊपर क्या है? Rock layer, like this. इसके नीचे क्या है? Here also there is a rock layer. ये भी rock की layer. इसके बीच में here this is aquifer, पानी भरा हुआ, right? This water is under immense pressure. Now if you simply drill a hole over here, if you drill a hole over here and place a pipe over here, the water starts moving out in the form of a fountain. This is called as artesian well. That without any support, without any mechanics, without any use of pumps or motor or electricity, the water starts moving up. That phenomena is called as artesian well, right? No, that is hot spring. जो गर्म पानी निकल रहा नीचे से ऊपर, तो normal पानी का निकल रहा है, तो that is like artesian well only, but on Himalaya generally it is related to hot springs and geysers, right? So that is artesian well. Now aquifer. In your question there are two types of aquifer written. One is called as confined. Confined का मतलब क्या है? Surface of earth is there. Below surface of earth there is a rock layer. Water present over here. Again a rock layer. Right? And both these layers of rock are impermeable. Permeability नहीं है. Water cannot move down. So this is confined aquifer. इसका पानी ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसके बीच में रहेगा. पानी साइड से कहीं से आ सकता है. So it is confined. Confined into what? Confined by a impermeable rock on the top and impermeable rock below that. So it is confined between that layer, right? और generally ये होता कहाँ है? This is very deep from the surface. ये deep होता है. It is deep. Confined aquifer. Am I clear on that? Unconfined aquifer. Surface of earth. एकदम ही पास में पानी है, इसके पास में. And the rock over here, this rock. This rock is permeable. Direct recharge हो रहा है. So it is unconfined. Water will enter this particular region from the surface also. So what is written over here in the question? It is possible in case of confined aquifer. Confined जो मैंने पहला वाला बताया था. It is sandwiched between aquatarts. Aquatarts is a layer of impermeable rock. For a layer of impermeable rock, the term used is aquatarts, right? That is impermeable layers. It is deeper, गहरा होता है, and less contaminated. Because it is deeper and water cannot easily penetrate. जब पानी नहीं जाएगा तो pollution कहाँ से जाएगा? So it is less contaminated, more potable, more drinkable. Am I clear on that? That is called as confined aquifer. Unconfined aquifer, water table close to surface, under permeable rocks. Permeable rocks हैं. High contamination जरूरी नहीं कि हो, but possibility है. Are you getting that? Like दिल्ली में बोरिंग का पानी पीना मना है. It is not an advisory. It is a strict no. अगर आप पी रहे हैं तो आप गलत कर. सप्लाई का पानी MCD भरोसे आ रहा है, ठीक है, पी लो, लेकिन पीना मना है. उसका रीजन बोरिंग का पानी, क्योंकि यहाँ पर नीचे आर्सेनिक लेड पोल्यूशन है. सो इफ यू आर ड्रिंकिंग दैट, तो आर्सेनिक लेड अंदर जा रहा है, राइट. MCD का पानी पीना फिर भी सेफ है. इधर का कहाँ? हाँ, ये तो ठीक ही है, इसका तो कोई इशू नहीं, लेकिन बोरिंग का पानी जो है दैट इज नॉट पोर्टेबल इन द सिटी दिल्ली. Reason is this high contamination. Are you getting that?
Great Artesian Basin of Australia is an example of this. Great Artesian Basin, that is a great artesian well, that is a common and a prominent region that depicts this phenomena, artesian well, right? It covers the region around Lake Erie in Australia. Lake Erie locate किया आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में? डाउनस्लैंड पता है? डाउनस्लैंड के सेंटर में लेक आयरे, 800 किलोमीटर बाई 400 किलोमीटर्स अराउंड लेक आयरे, that is a downsland, that is a temperate grassland, and around Lake Erie the region is known for this phenomena, that is artesian well. Now artesian well, पहले स्टेटमेंट को देखिए, अभी समझ में आ गया जितना मैंने बोला? फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कन्फाइंड एक्विफर, 100% करेक्ट, राइट? Artesian well is a common phenomena for confined aquifer. In unconfined aquifer possibility है, लेकिन उतना कॉमन नहीं है जितना कन्फाइंड एक्विफर में. तो अनकन्फाइंड एक्विफर में यू कैन नॉट रूल आउट, इट कैन बी फाउंड देयर ऑल्सो, बट कॉमनली इट इज फाउंड इन केस ऑफ कन्फाइंड एक्विफर. क्या मैनमेड? नहीं बेटा, सब नेचुरल है, दिस इज नॉट मैनमेड. हाँ, होल मैनमेड है, होल मैनमेड है. जब हमने उसको यूज करेगा हमें पता है, और जब हमें नहीं पता, जैसे लास्ट ईयर हुआ राजस्थान में, जोधपुर में एकदम से पानी बहुत सारा निकलने लगा, तो इट वॉज डिस्कवर्ड कि आर्टिजन वेल एक कन्फाइंड एक्वेफर था, वो पंचर हो गया किसी वजह से, सारा पानी बाहर निकलने लगा. इट रिक्वायर्स एन ओपनिंग टू कम आउट बिकॉज वाटर इज अंडर इमेंस प्रेशर. पानी ऊपर निकलने के लिए तैयार है, बस उसको रास्ता मिलना चाहिए. तो जहां उसको रास्ता मिलेगा पानी एकदम से ऊपर आ जाएगा. आर यू गेटिंग दैट? अगर कन्फाइंड एक्वेफर्स होता है, वहां पर आपने बोरिंग कर दी, और मान लीजिए वेल खोदा जा रहा है, कुआं खोदा हो रही, तो कुआं अपने आप ऊपर तक हमेशा भर जाता है. उसका रीजन ये है कि कन्फाइंड एक्वेफर. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कन्फाइंड एक्वेफर तो होगा ही होगा. इन रेयर केसेस इट कैन बी फाउंड इन अनकन्फाइंड एक्वेफर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. 2 और 3 तो फैक्चुअली करेक्ट है. So all 3 are correct. Option C, C for cat is the correct answer. Consider the following statements on digital tree Aadhaar. Now, equitards is the layer of impermeable rock which is not permitting the water to enter confined aquifer. क्या हो सकती है? एक्विटार्ड एक्विफर को रोक रहा है भरने से, जितना है उतने को रोक रहा है, कन्फाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्विटार्ड. सो अ लेयर ऑफ रॉक which is impermeable in nature, that is called as एक्विटार्ड. ठीक है. It provides QR codes to trees detailing specifications. डिजिटल ट्री आधार सुना है? नहीं, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में चिनार ट्रीज, मैपल ट्रीज को बचाने के लिए उनके ऊपर QR कोड लगा के प्लेट लगा रहे हैं, उसकी हाइट, विथ, गर्थ, कितना मोटा पेड़ है, कितनी हाइट है, वो सब लगा रहे हैं. तो दैट इज डिजिटल ट्री आधार. It was launched by the government of Jammu and Kashmir, correct. It is to preserve chinar trees. All 3 statements are correct. Option C, all 3 will become the right answer. Consider the following statements on WMO report. India witnessed less temperature increase due to high aerosol pollution. Yes or no? भाई इंडिया का टोटल ग्लोबल वार्मिंग के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम बढ़ा. पूछा गया क्यों, तो बताया कि पोल्यूशन बहुत है. सो एल्बिडो इंक्रीज ओवर देयर. Due to high albedo, the total temperature, total insolation reaching the surface of Earth reduced over India. Ocean warming has almost doubled in last 20 years in comparison to preceding 4 decades. 2005 to 2025, ocean warming has doubled as compared to 1960 to 2000. तो पहले 4 दशक और अभी के 20 साल डबल हो गई. Ocean absorb almost 90% of excess heat from human activities. Yes, almost 90%, more than that. It absorbs. Land warms faster on average than oceans. You know, all 4 are correct. Option D, D for dog is the correct answer. Consider the following statement. Lake effect snowfall is common along Lake Michigan of USA. What is lake effect snowfall?
surface of water, right, lake, any water, and this water is warm, not hot, thoda garam. Air is starts blowing over this water and this air is cold, right. Now this air is blowing over water. As soon as this air reaches this water, right, जैसे यहाँ पे पहुँचे, it gets temperature from water. Spontaneous, it picks up moisture. थोड़ा सा temperature मिला, it became warm, it conducts evaporation, it picks up moisture. As soon as the moisture is added, the upper layer over here, this is cold, this provides less temperature, right, and यहाँ से evaporation हो रहा है. So whatever moisture that is picked up from this water body freezes immediately and directly transforms into solid form, that is snow. जब तक ये हवा इस वाटर बॉडी को क्रॉस करती है तब तक वो स्नोज के पास होती है, एंड एज सून इट क्रॉसेस द बॉडी, दिस वाटर बॉडी, इट स्टार्ट्स कॉजिंग स्नोफॉल. तो हवा बहते हुए आ रही है और सीधे स्नोफॉल करते हुए आगे निकल जा रही है. दैट इज कॉल्ड ए लेक इफेक्ट स्नोफॉल. एम आई क्लियर ऑन दैट? दिस लेक इफेक्ट स्नोफॉल इज कॉमन अलॉन्ग लेक मिशिगन इन यूएसए. शिकागो, मिल्वॉकी में अक्सर होता रहता है ड्यूरिंग विंटर्स. इट टेक्स प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर ओवर वार्म वाटर. इट इज अ लोकलाइज्ड फिनोमिना, जहाँ का होगा वहीं का होगा. इट इज पॉसिबल ओवर बेज एंड सीज एज वेल. वहाँ भी हो सकता है डिपेंडिंग कि वाटर इज हैविंग सुटेबल टेम्परेचर कंट्रास्ट एज कंपेयर टू एयर ब्लोइंग ओवर देयर. एयर के पास फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है. So all four are correct. Option D, D for dog, is the correct answer. Consider the following statement. Santana winds are hot, gusty winds. They are downslope winds. They blow generally during the fall of winter. Fall of winter, winter में, spring में, हर समय. Fall of winter is the most common season for them. They may spread forest fires. El Nino inhibits these winds whereas La Nina promotes them. यार ऐसे मत करो यार, कंपटीटर है तो तुम लोग उसका आईपैड तोड़े डाल दो. सारी मेहनत उसकी उसी में होगी बेचारी. El Nino inhibits these winds whereas La Nina promotes them. Think over this statement. Statement number 5. Santa Ana is flowing away from the coastal area. Yes or no? Towards the sea. El Nino is there. El Nino will increase the temperature, right? Yes or no? El Nino की वजह से temperature बढ़ जाएगा. So that high pressure area which is generating these winds will become weak. So El Nino inhibits or disturbs these winds, whereas La Nina supports them. So statement number 5 is also correct. So all 5 are correct. Option D, D for dog, is the correct answer. El Nino है, temperature बढ़ेगा, so high pressure conditions which are required for the generation of these winds will be getting disturbed over the coastal areas. So wind will become खत्म नहीं होगी, it will become weak. So how many spells of wind will hit California coast during one season? That will vary it. ऐसे 28 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार आ जाएगी. El Nino आ गया, it will come hardly 8 to 10 times, right? La Nina will support that. Consider the following statements on hydrothermal vents. These are the fissures in oceanic bottoms near active volcanoes. Hydrothermal vents, ocean के bottom में cracks are there. They are called as hydrothermal vents. They are formed by intrusion of cold sea water in fissures. नीचे समुद्र का पानी ठंडा होता है. That cold water enters, magma heats up the water, and water moves up as heated water and steam. So when this hot water is moving up, it is also minerals present in the rock, and those minerals also come out along with the water. They release hot water rich in minerals and chemicals, correct? They support biodiversity independent of sunlight. Because of that, chemosynthesis takes place, right? And the bacteria over there directly produce energy without using oxygen. Oxygen है नहीं, use क्या करेंगे? Are you getting that? So that support. और ये this is debatable कि life started probably at the bottom of the ocean. कि अगर photosynthesis की जरूरत थी ही नहीं तो chemosynthesis की वजह से तो life और पहले शुरू हो गई होगी. तो अभी debate चल रहा है, इस पर भी proven कुछ नहीं.
They include black smokers जिसमें आयरन सल्फाइड निकलता है, एंड वाइट स्मोकर्स विच आर हैविंग बेरियम, कैल्शियम, सिलिका। अगर आयरन और सल्फाइड होता है तो जो पानी निकल रहा होता है उसका कलर डार्क हो जाता है, सो ब्लैक स्मोकर्स। अगर पानी का कलर डार्क नहीं हुआ तो दे आर वाइट स्मोकर्स। So all five are correct. Option D, D for dog. Consider the following statements. Almost 33% sandy beaches of the world are affected by coastal hardening. Coastal hardening is what? Construction of concrete structures on the coastal areas, beaches. So that is called as coastal hardening. Bay of Bengal is one of the most affected regions. As yes, Bay of Bengal में सबसे ज़्यादा effect. कुछ भी negative दुनिया में हो रहा है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होगा. So Bay of Bengal is one of the most affected regions. So both 1 and 2 option C, C for cat is correct. Cold drop, Dana. What is this? Polar area, equatorial area. ठीक है? Polar jet stream is present over there. Polar jet stream is moving west to east. Polar front jet stream is moving west to east at a very fast speed. It is moving so very fast. In that fast movement, it leaves a huge balloon of air and that gets detached from that jet stream. Jet stream पता है ना सबको? So jet stream is moving very fast. अब उसमें इतना तेज मूव कर रही है, उसने एक बहुत बड़ा एयर का टुकड़ा विच इज कॉल्ड एज अ बैलून ऑफ एयर विच में बी कॉल्ड एज एन एयर मास, वो डिटैच हो गया जेट स्ट्रीम विच इज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर और वहां से डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंचने लगा. राइट नाउ दैट कोल्ड एयर इज हेवी, इट हैज टेंडेंसी टू सिंक डाउन एंड दिस इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना दैट टेक प्लेस वेरी क्विकली इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. 1 से 2 दिन में एकदम से हो जाएगा. इट रीचेज ओवर देयर, that cold air starts moving down, it is a huge mass of air, it starts settling down. जितनी ज़्यादा हवा नीचे आएगी, the more the mass of the air which is coming down, it will cause the upward movement of air. So नीचे की air जो पहले से present है, which is humid, which is warm, that air is forcefully convected upwards. Are you getting that? क्योंकि ऊपर से cold air नीचे आ रही, नीचे से warm air को जबरदस्ती push करके ऊपर भेज. So intense convection again within a short span of time, heavy condensation take place, cumulonimbus clouds get formed, followed by excessive thunderstorms. Are you getting that? That phenomena is called as cold drop, and Dana, DANA इसका full form है, that is a Spanish term because the phenomena is very common in the region of Spain. That is a Spanish term, जिसको Dana कहते हैं. It is a cold air mass detached from the polar jet stream. It causes strong convection of humid air. It is associated with thunderstorms. It may remain stationary in the short run. एक ही जगह पे 2-4-5 दिन रुक जाता है, तो वहाँ पर एकदम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कर देता. It is common in Mediterranean. These are the regions where it is common. Mediterranean, Southwest USA, California, Las Vegas वाला area, Chile, Peru, and eastern side of Australia. Are you getting that? This is called a Dana or the cold drop in meteorology. What is cold drop? This is cold drop. Am I clear on that? All 5 statements are correct. Option D, D for dog is the correct answer. Consider the following statement. The dates for perihelion and aphelion are always fixed. Correct or not? नहीं, wrong है. अर्थ का वॉबल होता है, it keeps on fluctuating. In general, we consider them as 3rd in January or 4th of July, but they keep on fluctuating year to year. Every year changes होते रहते हैं. इस साल 4th जनवरी को it was perihelion. अब वैसे डेट क्या है? 3rd जनवरी. अगले साल का डिक्लेयर्ड है 6 जनवरी को करेंगे 2027 में. So it keeps on changing. It is not always fixed, but it is considered as fixed. कि वही जनवरी के फर्स्ट वीक में पड़ेगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में पड़ेगा. बोथ पेरिलियन एंड एफिलियन आर सुटेबल फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसमें कोई डाउट किसी को? बोथ आर सुटेबल पोजीशन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. So both, नहीं, 1 is wrong, 2 is correct. 2 only. Option B, B for boy will be the correct answer. Arrange the following places in descending order in terms of duration of day in summers. ये तो आप लोग कर दो.
Descending order in terms of duration of day. Descending order means maximum duration to minimum duration, and it is the summer month. Summer का मतलब as you go north, day will be longer. So you have to arrange them not to. तो arrange कर दो. 2431. Option B, B for boy, will be the correct answer. Consider the following statements on earthquake. Richter scale, magnitude open-ended. Correct or not? Yes. कोई doubt? पहले वाले में, पिछले वाले में, बताइए. Descending order, ड्यूरेशन ऑफ डे. तो सबसे बड़ा दिन जहां होगा वो सबसे पहले आएगा. समर मंथ. तो क्यों बेटा? During summers, as you will go north, duration of day will go on increasing, and finally it will become 24 hours of day at North Pole. Yes or no? तो जब आप नॉर्थ से साउथ आएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ डे कम होता जाएगा. और वही पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? जितना नॉर्थ में जाएंगे उतना बड़ा दिन होगा. तो नॉर्दर्न मोस्ट में से कौन सा है? लखनऊ. उसके बाद इंदौर इन एमपी, जलगांव इन महाराष्ट्र, हैदराबाद इन तेलंगाना. Consider the following statements on earthquake. Richter scale, it measures the magnitude, it is an open-ended. Modified Mercalli intensity, closed-ended. ये हम लोगों ने कल करा था. Moment, magnitude scale, size, strength, measure earthquake. All three are correctly matched. Option C, C for cat. Consider the following statements: Horn, Pingo, Fjords, Biscuit tray topography, Basket of X topography, Came, Kettle, Patterned ground, Valley in valley. How many are glacial landforms? Any question? Any doubt in that? Horn is what? Glacial landform. Like Himalayas. Himalayas में Mount Everest, Mount Blanc. Horn क्या होता है? ऐसे से जो पीक बन जाती है. Right? That is a horn. Pingo is what? Ice melting. पानी यहाँ आ गया, धीरे धीरे इस तरह लैंड को उठा देगा ऊपर. Yes or no? So this is called as a pingo. ये पिंगो बन गया. Number 7, patterned ground. If this land is not soft, then it develops cracks. Cracks बना देगा, that is patterned ground. Fjords तो पता ही है सबको, तो यूपीएससी ने पूछ लिया, सबको पता. Biscuit tray topography, not Roche-Mutoni. Biscuit tray topography related to Arate. ऐसे serrated ridges. Arate coal, biscuit tray topography. जो एक सर को दूसरे सर से अलग करता है, रिज जो होता है, serrated ridges. Basket of X topography, क्रेग एंड ट्रेल, ड्रम लेंस. जब सैटेलाइट इमेज में देखते हैं तो जगह जगह आपको लैंड ऐसे ऐसे दिखता है. So it appears as if so many eggs are kept in a tray. That is drum lens. Basket of X topography, Craig and Trail मैंने पढ़ाया आप लोगों को. Then came and kettle, outwash landform. Came क्या होता है? ऐसा. Kettle ऐसा. Outwash landform, moraines get formed. Moraines gets washed away. So you get the formation of came and kettle. Pattern ground पर valley in valley topography. नहीं, valley in valley topography is hanging valley. V shape, U shape valley are two different things. Valley in valley topography is associated with glacial landform as well as with river landform. River landform में जब हम बात करते हैं paired और unpaired terraces की, river terraces याद है? So river terraces is also valley in valley topography. Glacial में valley in valley topography when hanging valley is there, so one valley hanging over another valley. So all are associated with glacier. So all 8 option D for dog shall be the correct answer. Consider the following statement: pedestal rock, Fels-Felsen, Gara, Zeugen, Yardens. How many above are related to mushroom rocks? अरे सब में all नहीं होता यार.
1. Mushroom rock is what? Mushroom rock is something like this, na? ऐसा सा होगा ना mushroom rock? Yes or no? What is 𝐤𝐭𝐴? 𝐤𝐭𝐴 erosion एक ही तरफ से हो रहा. That is 𝐤𝐭𝐴. Yes or no? And what is yardang? Vertical steps are left out. उसके बीच का पूरा material erode हो गया. That is called as yardang. And what is pedestal, Pilsfelsen and Gara? They are mushroom rock only. Pedestal rock is the term used in Switzerland, Pilsfelsen in Germany, Gara in Sahara Desert. So the answer will be 1, 2 and 3. ये तो mushroom rock है ही नहीं. 𝐤𝐭𝐴 and yardang are not mushroom rock. They are altogether different landforms. हैं desert के ही, हैं wind landforms, but they are not mushroom rock. And first 3 are mushroom rocks only. Consider the following statements on ultraviolet radiation. Answer क्या हो जाएगा? Pilsfelsen is the term used for mushroom rock in Germany. Gara is the term used in Sahara Desert. Pedestal rock is the term used in Switzerland. 𝐤𝐭𝐴 and yardangs are 2 different landforms which are not mushroom rock but related to wind landforms found in desert. So here the answer will be only 3, option B for boy. And which are the 3 one? First 3. Consider the following statements on UV radiation. UVA long wavelength passes through ozone. UVB sunburns mostly absorbed by ozone. UVC energetic almost completely absorbed by ozone. All 3 are correct? Sure? Put doubt on it? So all 3, option C for cat is the correct answer. Consider the following statements on northern and southern lights. Henley in Ladakh witnesses auroras during intense solar activity. Yes or no? Henley Ladakh में है ना? At times auroras can be seen even from equator. हाँ? Equator से दिखेगा कि नहीं? हाँ तो लिखा तो है at times, मतलब at times, कभी कभार हो सकता है ना. When there is intense solar activity, very strong geomagnetic storm, auroras can be seen even on equator, but it is a very rare phenomenon. हाँ 24 में तो हुआ, 24 में पता नहीं क्या क्या हो गया. Then the red and the green light is due to oxygen, blue and purple are due to nitrogen. All 4 are correct. Option D for dog is the correct answer. Consider the following statements. Ozone is thicker over poles than equator. Brewer Dobson in circulation transfers ozone from tropical to polar stratosphere. Ozone has longer lifespan in poles than equator. The unit to measure thickness of ozone is Dobson unit. 1 Dobson unit equals 0.01 mm. The average thickness of ozone is considered 300 Dobson unit. Ozone hole is defined as thickness below 220. First 3 statement में doubt हो रहा है. Ozone is thicker over poles than equator, correct or not? 100% correct. Ozone is thicker over poles than equator. The reason is that formation of ozone takes place on equator and then that ozone flows in a stratosphere, not in troposphere, in a stratosphere from poles to, sorry, from equator to poles. Because on equator अगर ozone वहाँ पर है, formation तो ज़्यादा हो रहा, equator पर ही हो रहा, tropical area में ही हो रहा, but after being formed it moves from tropical area towards polar area. Then why equator is having less thickness as compared to pole? Because in poles due to less temperature it sustains. On equator due to high temperature disintegration of ozone also takes place. Formation भी हो रहा, disintegration भी हो रहा. Are you getting that? So overall thickness is slightly more at poles as compared to equator. And this Brewer-Dobson circulation, ये 2 लोगों का नाम था जिन्होंने इसको पता किया तो उनके नाम पे circulation का नाम रख दिया गया. That takes place in lower stratosphere, transferring the ozone which is formed on a tropical area towards polar area. So this is correct. Ozone has longer lifespan on poles as compared to equator. This is one of the reasons why thickness is more on poles as compared to
इक्वेटर, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज मोर ऑन इक्वेटर एंड पोलर एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, सॉरी पोलर पे तो फॉर्मेशन है ही नहीं, इक्वेटर पे जो बनेगा वही वहां पहुंचेगा। तो ऑल 6 आर करेक्ट, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन इंसुलेशन, ये तो मैंने सबको पढ़ाया कई बार। इंफ्रारेड 50-52 करेक्ट है, visible light 40-42 and ultraviolet is 6 to 7, all three are correct, option C, C for cat. Ascending order of albedo, ascending order of albedo, so minimum albedo will be by water, then 3-2, then clouds and then snow, so 3-2-4-1, option A for apple shall be the correct answer. Consider the following statement, relative humidity must always be 100% for initiation of condensation. No, even at less humidity, if hygroscopic nuclei is having affinity for water, it may extract water directly, condensation start हो जाएगा. 100% humidity, relative humidity is an ideal condition, but even if the relative humidity is 75% or 70% and a nuclei that is present, it is having high affinity for water, it can extract water from the air directly. So it can begin even when the relative humidity is not 100%. Relative humidity is inversely related to temperature. Lesser the temperature, high the relative humidity, correct? High or low relative humidity is quantification for the quantity of water. मतलब हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लो ह्यूमिडिटी हमको बताता है कि कितना पानी है, एब्सोल्यूट तो नहीं बताएगा ना, इट इज अ परसेंटेज सम, तो क्वांटिफाई तो नहीं करेगा ना, इट इज ओनली अ परसेंटेज कि कितनी कैपेसिटी है उसमें कितना परसेंट है, हो सकता है कैपेसिटी 1 ग्राम हो, 1 ग्राम है तो भी 100% बता देगा, यस और नो। So statement 3, it is not a measure for quantification, so 1 is wrong, 2 is correct, 3 is also incorrect. So 2 only, option A for apple, only 1. Statement 2 is correct and statement 3 is incorrect. So 2 only, option A for apple. Consider the following statements on supercooled water. It is liquid water that has been cooled below its normal freezing point without solidifying into ice. It is the purest form of water which lacks ice nuclei. It is an unstable state and even a small disturbance may cause freezing. Supercooled droplets are common in high clouds. It gives rise to the concept of freezing rain. Yes? Any doubt in that? Anyone? किसी भी तरह का न्यूक्लियाई वहां पर एब्सेंट है जिसकी वजह से आइस बन जाए, कोई ऐसा न्यूक्लियाई जिसकी वजह से आइस बन जाए, आइस न्यूक्लियाई, तो दैट इज एब्सेंट, कोई न्यूक्लियाई है ही नहीं, नो इम्प्योरिटी, नथिंग। कहाँ पे? नहीं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, उस बॉटल में प्रेशर ज्यादा होता है तो हाई प्रेशर में फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होता है आपको, तो जैसे ही आप खोलते हैं तो उसका प्रेशर रिलीज होता है और जम जाता है, और दिस इज सुपर कूल्ड वाटर, दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो पानी को अगर आप ठंडा करते जाएं और यू कैन टेक द टेम्परेचर टू -40, राइट, एंड नो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, इम्प्योरिटी है ही नहीं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये नहीं कि पानी ठंडा हो रहा है उसको हिला रहे, then it will remain in liquid form, it will not freeze, that is super cooled water. Am I clear on that? So with this we come to the end of our this module. अब आप लोग के जो क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या टाइम स्लॉट आप लोग के साथ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल डिसाइड, राइट। हाँ, वी विल डिसाइड, वी विल लेट यू नो कि अगर शेड्यूल मिलेगा तो क्लास होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। मैपिंग के तो क्वेश्चन बेटा जितने होने तो हो गए, आप लोग प्रीलिम्स में जाने के पहले इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, टुडे इज 28th, 9th, 29th हो गई, 15 मई के बाद पढ़ाई मत करिएगा, रिलैक्स रह के एग्जाम देने जाइएगा, अगर आप रिलैक्स रह के एग्जाम देने नहीं जाएंगे आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा।
जो काम तुम्हें लगता है कि जिसको करने से तुम्हें रिलैक्स हो सकते हो वो सारे, है। चलिए, don't remain under pressure, remain free, remain, you have to put yourself, ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप प्रेशर में एग्जाम देने गए, देन आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे, वॉट एवर यू विल बी डूइंग दैट विल बी नॉट अप टू द मार्क। समवन फ्रॉम द वीडियोग्राफी टीम प्लीज कम टू द क्लास। ठीक है, मैं क्लियर ऑन दैट। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन।